चला जाएगा। हाँ वो तो जाएगा, वो चांदी का सिंहासन है। हाँ और ये राजा साहब ने दिया था, तो वो वहाँ सिंहासन जाएगा, उसी पर ये राम लला चारों भाई को स्थापना हो जाएगी, उसके अगल बगल शालिग्राम हो जाएंगे। So from Ayodhya to Rameshwaram, all of India and the world is looking at Lord Ram. And we'll keep bringing you all the latest updates, not only from Ayodhya, but the entire nation. Stay tuned to CNN News 18's grand and rolling coverage on Ram Mandir. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया राम। जय बनी चली है, इस ज्योति का कितना लौ होगा। जो ज्योति न जाने कितने लगभग 12 करोड़ माताओं की आंखों से धुआं हटा करके जली है, उस ज्योति पर विपक्ष को गर्व हो न हो, हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा साहेब, हमें रहेगा साहब। क्या बात है। तो जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप पर यह आरोप लगता था कि आप कह रहे हैं कि मंदिर तब बनाएंगे जब आप कुर्सी पर बिठाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 24 के लिए कह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमें वोट बनाकर फिर से सरकार बनवा दो। वो प्राण सियासत भी ला रहे हैं इस आस्था वो में। प्राण प्रतिष्ठा में कभी नहीं आते, वो तो राम का प्राण हरने में विश्वास करते हैं, राम को प्राण देने में विश्वास ही नहीं करते हैं। अभी जो लोग भी आपके मंच पे आएंगे, जो इंडी अलायंस से होंगे, आपको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या दिक्कत है? 500 साल से राम जी के मंदिर को तोड़कर, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी। अगर आज का कानून उस समय होता ना, तो बाबर को फांसी की सजा होती। आप किसी दूसरे, आज भी मैं इस शो में कह रहा हूं, मैं एक सांसद के रूप में भी कह रहा हूं, किसका मजाल है जो किसी भी धर्म के किसी देवालय को गिरा दे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, क्या कोई तोड़ सकता है? हमारा कानून ऐसा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने में राम का सम्मान क्यों छूट जाएगा? चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, उदर भूख सबकी बुझाता। राही का तरवर, प्यासे का सरवर, सकल प्राणियों का जो दाता। कष्टों का करता है जो भंजन, महादेव करते हैं जिनको नमन। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान। वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। न्यूज 18 के भी राम है। आपने भी बहुत सुंदर भजन बनवाया है, मैं सुना मैं उसको। हाँ, देखिए हमने तो बस इतना कहा है कि पल पल में युग युग में Welcome back. You're watching 100 hours of non-stop coverage of CNN News 18 on Ram Mandir. My colleague Anand Narasimhan spoke with Swami Amrita Swarupananda Puri, the Vice Chairman of the Mata Amritananda Swami Math and the President of Amrita Vishwa Vidyapeetham. Listen in to this conversation. It's a historic moment for Bharat, perhaps a momentous occasion where many believe that this is the point from where we as a nation, a civilization will take off. And
Joining us now is Swami Amrita Swarupananda Puriji. He's the Vice Chairman of the Mata Amritanandabai Mutt. He's the President of the Amrita Vishwa Vidyapeetham. But more importantly, he's one of the first disciples of the first person to get sannyasa under Mata Amritanandabai. So, Swamiji, namaskaram. Thank you very, very much. Thank you for your time. Let me first ask you, sir, how do you see the Prana Pratishtha January 22nd, 2024? How big an occasion is this? What's the significance? The Rama Mandir in Ayodhya is indeed a significant milestone. But I would say Lord Rama is even more important. As a role model for people from all walks of life, Sri Rama's exemplary life and teachings he imparted through his life and actions will continue to inspire future generations. The Ram Mandir signifies a revival of Bharat's intrinsic culture. So it's definitely a historic moment. However, Ram and his message, his life, his actions, his life that demonstrated beyond all divisions, going on beyond all divisions, to be a true secularist. That should be followed, that should be observed. But many believe Ram was Kalpanik, he's a myth. He's not history or itihasa. What would you say? And what does he actually stand for? You've touched upon it, so can you elaborate? Ram stands for Dharma, which is essential for maintaining a balance between the external and the internal worlds. And following Dharma is crucial as it helps to keep greed at bay, which is a major problem in our society. Greed causes a disturbance in all aspects of life, including corporate, political, family, and workplace environments. Just as every place, including our homes, has a structure, the universe also has a structure, and this structure is known as Dharma. Ram's life and actions exemplify a life free of greed and filled with selflessness. And this is the reason why a state of great equilibrium was maintained in Ayodhya and neighboring countries during the Ramayana period, which is known as Rama Rajya. The whole concept of Rama Rajya emerged from that. And regarding the question whether Ram is real or fictional, Kalpanik, I would like to pose a counter question. Are Buddha, Mahavir Jaina, Guru Nanak, Jnanadeva, Shirdi Sai Baba, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda, Jesus Christ, Prophet Muhammad, and Mahatma Gandhi real or fictional? Kalpanik. Are they merely products of a creative writer's imagination? Right, Prime Minister Modi over there in the Grand Ramanatha Swami Temple, now all set for the holy dip. We are also being told that he's attended the Sandhya Bhajans that took place, a form of devotion to Ram, where bhajans in all languages were sung in devotion to Lord Ram. And over there, Prime Minister Modi taking the holy dip at the Sri Ramanatha Swami Temple. As we all know, Prime Minister has been on a grand southern outreach. He's been making these temple runs. Earlier, he was in Trichy and that was the temple that's dedicated to Lord Vishnu. Those visuals that we are bringing to you first on CNN News 18 of Prime Minister Narendra Modi taking the holy dip in Rameshwaram. As we all know, he is in Tamil Nadu today and will continue to stay in Tamil Nadu even tomorrow. This is part of Prime Minister's grand inclusive outreach as far as Lord Ram is concerned in the build-up to the grand consecration ceremony or the Pran Pratishtha that will be taking place on 22nd of January. Important to highlight that the temple that was visited by Prime Minister earlier during the day in Trichy is one visited by he was the first Prime Minister to be visiting that temple post free independent India.
And now, as we all can see, Prime Minister Modi over there at the Ramanatha Swami temple, continuing the practice being observed during Prime Minister's visit to multiple temples that he's visited in the last few days, whether in the state of Maharashtra or even Kerala, now in Tamil Nadu. We all know that Sri Ramayan Paryan has also been part of the program, which is also recitals of the Ramayana in various different languages. And now Prime Minister almost nearly concluding or culminating his visit to the grand Sri Ramanatha Swami temple with that holy dip. Those are the visuals we are bringing to you of Prime Minister taking that holy dip at the Sri Ramanatha Swami temple. Earlier, we brought you visuals of Prime Minister participating in the Bhajan Sandhya, where multiple devotional songs were being sung at the temple complex. And now, as we can see, Prime Minister taking that holy dip in Rameshwaram. Now, these are cities which have tremendous spiritual significance, as CNN News 18 has been constantly underscoring the fact that Ram is in us and for all of us, as has also been spoken by Prime Minister Modi. This is Prime Minister's way to highlight how Lord Ram is a God who has connect not just with northern India, but also is a figure deeply admired and also prayed to in southern India, south of the Vindhyas. Yes, the matter has already been politicized by various political parties, but Prime Minister Modi, keeping the politics aside, is making that grand outreach to all those temples in southern India. Earlier, as we know, Prime Minister also visited temples in Maharashtra and Kerala. Let me also highlight how important and significant was the visit to the temple he visited in Nasik. We all know that the Lepakshi temple has its own significance as far as the Ramayana is concerned. For instance, Lepakshi temple is the place where the Jatayu, the mythical bird, fell after being injured by Ravan. Bit by bit, these are all temples that have a strong connect with the Ramayana, and this is the grand build-up to the Ayodhya Ram Mandir ceremony of Pran Pratishtha, which will be taking place on Monday. And with that, it's a quick wrap from my end. Many thanks to you for staying with CNN News 18's live and rolling coverage on the Ram Mandir. We'll be back after a short break. Pooja, you left. हर क्षण में, हर तन में, हर मन में राम, प्रणाम सिया राम, प्रणाम सिया राम। ये जो आपने प्रणाम कहा ना, ये प्रणाम कहा था जनकपुर ने, जब ससुरारी में आए राम। हम उसी धरती के एक वासी, मेरे तो पहुना है श्री राम। हम हंसते हंसते पहुना को कुछ हंसी सुना भी देते हैं। हमसे बखान के करी भैया, हम राम जी को कभी कभी गरिया भी देते हैं। हम तो जनकपुर वाले हैं ना भैया। प्रणाम प्रणाम राम, ये सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मिथिलांचल में राम जी को कैसे उनका स्वागत, उनको मंगल न तोनो भयो राम के बियाह नियर, सुनली नहीं कान से न नैना निहारी हैं। हमसे बखान के करी हो राम रघुबर के, हम त राम पहुना के रोज देत गारी हैं। हम तो बसिंदा हैं जी राम के ससुरारी के, सिया जी हमार बहिना, राम पहुना हमारे हैं जी सरकार। हम तो पहुना भाव में रहते हैं। पर अब थोड़ा सा एक सियासी रंग इसमें क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो आस्था का तो विषय राम है, पर राम राज की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें विकास, हर किसी को, किसी के घर में अंधकार ना हो, किसी को भी रोटी की दरकार ना हो, इस तरीके का राम राज्य की परिकल्पना हम कहते हैं, मानते हैं। तो क्या वो हो रहा है? पिछले 9 साल में ऐसा दिख रहा है? नहीं, थोड़ी सी नजर घुमा लीजिए। आज आपके कार्यक्रम का नाम है अयोध्या पर्व राम युग। राम जी की ज्योति स्थापित होने जा रही है। 11 दिन का एक अद्भुत यम नियम के साथ प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं।
जमीन पे सो रहे हैं, अपने खाने से पहले गौ माता को खिला रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यम नियम का कठिन पालन कर रहे हैं। और याद रखिए, मैं तो न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहूंगा, ये जो राम ज्योति है ना, केवल घी और दिया से नहीं जली है, ये राम ज्योति Joining us now is Padma Bhushan Vedacharya, author of more than 40 books, Pandit Vamdev Shastri or Dr. David Frawley. Namaste, Jai Hind. Thank you very, very much for joining us, Panditji. My first question to you is, what is the significance of the 22nd of January, consecration of Ram Lala at Ayodhya, Ram Janmabhoomi? Well, I see it as the long-awaited and necessary civilizational awakening of Bharat. India is not just a modern nation state along European lines, which was the Nehruvian idea. It is a great civilization with an important history and legacy for the world. Its legacy through yoga, Vedanta, Ayurveda, so many things has come out. But at the same time, India has not had a sense of its true identity, and there's been a lot of confusion and disruption. And instead of becoming Bharat in the awakening that civilization, it's become a dynasty supporting a certain coterie of people and their influences and personal needs today, and often a leftist Marxist ideology. But despite the distortions and the distortions, let me ask you, how integral is Ram to Bharat? Well, in relative to Ram, Ram is, of course, the avatar of Dharma. He's the national identity in many ways. Even the festivals, from Ram Navami to Diwali, are based upon Ramayana. And it was more an attempt to just negate the history of Bharat, not just simply to distort it in some ways. And it was part of a whole historical distortion, starting with the Aryan invasion theory. And from there, denying there was continuity to India's civilization, seeing India as a civilization of invaders. So one invader was as good as another invader. And also it allowed people to see India in terms of the Nehru dynasty in 1947 as if it didn't exist before. And they gave their national devotion and pride to the dynasty, not to their own culture. And so there was no cultural renaissance. Now compare them with Aurobindo. Aurobindo outlined the cultural renaissance that was needed, the civilizational awakening. That could not occur under the Nehruvian idea of India. And now that is arising. If that arises, that whole civilizational power, pride, creativity, spirituality will also come up. Partition happened, you mentioned partition, it happened on religious grounds, Hindustan and Pakistan. Could these contentious issues like Ram Janmabhoomi, Krishna Janmabhoomi, Kashi Vishwanath, could these have been settled at the time of partition itself? Well, that is the sad thing. Even after India was partitioned in favor of Islamic Pakistan, which certainly didn't protect the Hindus at all, India did not give they didn't give any sacred sites of the Hindus back to the Hindus. And they continued the principle of British colonial rule, and even this places of worship law froze these sacred sites in India in 1947. So that was a great disappointment. And if it had been done then, there would have been no trouble at all. If 4 or 6, if all these Kashi and
Varanasi and all these Ram Janmabhoomi, Krishna Janmabhoomi were taken back in 1947 or at that time, no one would have cared because the Muslims had their state, partition had been done, and even the Muslim population in India had to accept the fact they were in a Hindu majority India. So all that problem would have been avoided. It was only done to protect these certain group in power, namely the Lutyens or the Nehruvian type. And as they took power, they brought in leftist historians that denied and dismantled the history of India or Bharat. Do you believe the word secular has been debased or perhaps misused to deny Hindus their right to worship, right to access their place of astha, their right to pray? Well, there's two things. One, secularism was to remove the control of the Catholic Church over certain countries in Europe. And then we have to remember India was not the only country to undergo independence from colonial or even from Islamic rule. The countries of Eastern Europe reclaimed their church sites, they reclaimed their culture. The Greeks, of course, also, that was a much longer battle, restore Greece. So this idea of restoring your civilization, your sacred sites, removing the indications of invaders ruling you, happened all over. Even Saudi Arabia removed the Turkish mosques because they had been under Turkish rule for some centuries. And they said that these were political monuments. So there was nothing unsecular about Hindu majorities wanting, in fact, when they were under minority rule, they were oppressed that way. When Hindus finally get a majority rule, they're told to protect the minorities and not take care of themselves. So you see, this is not an issue of secularism. It's an issue of a certain group of the society, the Nehruvian British educated wanting to stay in power, and that a Hindu majority could remove them from power. So secular has become just a political propaganda tool. Hindutva is fascist, Hindutva is casteist. How would you respond to such statements? Well, first of all, fascists were Italian Catholics under Mussolini wanting to give more power to the Catholic tradition of Italy. You don't need to use these terms relative to Asia. Right and left are Western terms. And European nationalism, you're supposed to be a modern nation state, was also behind World War I, World War II, and now Europe has another war via Ukraine. So it was an attempt to demonize, Hindutva was an attempt to demonize any Hindu resistance. But all these groups have been using their own resistance and their own fighting, and also to tell Hindus that it's wrong for you to defend yourselves or assert your own identity because that is offensive to certain minorities and will hurt their feelings. Democracy is meant to be the rule of the majority, and particularly the rule of a majority that has been suppressed. So you might say the Hindus did not get independence in 1947 from being the oppressed majority under foreign rule. They became the oppressed majority under a certain leftist Nehruvian rule. But the Hindu way of life or Hindutva, is it inclusive or is it discriminatory? Well, let's go back to what religion is. The Western religions, Christianity and Islam, believe that they're exclusive. Ours is the only faith. God is with us, and if you don't join us, then you go to hell or some other bad place. And it's our duty to conquer and convert the world, which they tried to do for centuries, and which India was one of the main targets. And for conversion, India still is. So
If Hindutva people are fascist, what about all the missionaries and the colonial forces and even the Marxists? They've been trying to convert the world by force to their particular views. Hindutva are Hindus who are speaking out at a political level and wanting their rightful rights and power. Where do you stand on Varna and Jati, Panditji? It being associated with the cycle of birth and karma and rebirth. Is it the same as caste system? Yes. Let me put in a little broader perspective. When the British ruled India, they were the ruling caste, and Hindus were, the brown people who had to go to servant quarters and all the rest of it. After independence, the Nehruvian Lutyens elite was the ruling class, taking the privileges for themselves, writing the books, establishing the history, and all the rest of it. Varna is an ancient idea of the division of society based upon certain functions. It's kind of like the model of the human body. You have certain people who take the role of the educators or the head, the protectors or the arm, or they're supporting the feet, or they're doing these different roles, because society should be an organic structure, and you cannot perform all functions yourself. It's true the head is at the top of the body, but the feet shouldn't, the hands can't say, I want to walk on my hands, so the head is at the bottom. So Varna, as in all the societies to some degree, even in all the traditional societies, you had a priestly order, you had aristocracy, you had merchants, and all of that. And over time, it took certain rigidity in some areas. In other areas, it changed, or Varna changed. Jati is birth. Birth has a very important role in everything. Status of birth is always recognized. The British, of course, had that. So many countries, if you have a wealthy family, if you have an educated family, differences of birth are there. But there were also the supportive extended communities in a jati. Caste is a European term from the colonial era. I think there were 18 castes in Mexico between the pure Spanish at the top and the pure Native Americans at the bottom. But in the colonial world, all Hindus belong to the lower castes. And in the Nehruvian world, the Hindu religion is an inferior one, just as the Christian is. So there are social differences. And what's happened to Hindus in the West is because they're so successful in terms of education, affluence, high-tech, there's jealousy about them. It's also happened with the other Asian students. Asian students are restricted in the number of people going to school because they tend to do well. Now, as India, Bharat, is rising as a country, this is also causing jealousy for the other countries in the world, and they need excuses to divide India or to have it be less strong or make it politically incorrect. Look around India. What other country is more democratic and more diverse than India? Is it China? Is it Pakistan? Is it Bangladesh? Is it Iran? See, it doesn't happen that way at all. Shastriji, let's bring it back to Ram. Who is Ram to you and who is Ram to Bharat? A very good question. Now, Ram is very interesting in many ways. And of course, the thing we have to understand, Ramayana is the oldest book in the Sanskrit language. It's the Adi Kavi Valmiki and the Adi Kavya. Even Ashwagosha, who did the Buddha Charita, lauded Valmiki and the Ramayana while giving the life of Buddha. It is the oldest story in the world that's still being performed. It's the basics of India's music, dance, festivals, concept of Dharma. And Ram also appears as a great guru. We have also the, Yoga Vasishta Ramayana, all the secrets there. And then
you have to remember in the Indias, when the foreign invaders came in, why did they take Ram Janmabhoomi down? Because it was a symbol of pride to the Hindus. Why did the Hindus fight back for it? It was national identity. Even the dynasties of Korea had married a princess from Ayodhya, and that was a great gain for them. And what is the capital of Thailand called is Ayodhya. And Ram. So it is a civilizational identity and story. Of course, Mahabharata is part of that at another level. And it was taken care of for years and decades. And you have to understand, invaders are wanting to establish their power and dominance. And you do that by taking over civilizational monuments. That is a long thing. So Ram to me is also the arising of Bharat altogether as a new century for its civilization. And even Ram, we have a Hanuman temple and a Ram temple within an hour of where we live, built by the devotees of Neem Karoli Baba. So the chant of Ram is also moving globally, and the story is being everywhere. And what is Ayodhya will be? It's going to be a great tourist site. All the people of Asia going there. It's not threatening anybody. Hindus haven't invaded any countries. Even Ram had to save his wife, but there was no history of that in the Indian tradition. Hindus are a threat to who? Hindus are the most peaceful country of all the immigrants, and they are increasing the economies of the countries in which they are going to. They have to defend themselves from China, Pakistan, and other countries, but who are they a threat to? They are a threat to those who feel threatened by a resurgent India at a civilizational level, because it has different values, a different view of the universe, and it is also teaching people a way of life beyond politics, in harmony with the universal Dharma, Sanatana Dharma. Panditji, I have a question. How can Ram and Krishna both be apostles of Dharma when their methods were very different? Yes, they were in very different kalakhandas or yugas, but both had different approaches. How and why do they both stand for Dharma? Dharma is not a fixed law. Dharma means doing what is best possible in any given circumstance, and often in life we do not have ideal circumstances. Sri Krishna followed the path of diplomacy as much as he could. So did the Pandavas. The only choice they were given for not going to war would be to just give up altogether and let the forces of Adharma win. Dharma doesn't mean you don't fight. In fact, the Kshatriya Dharma means you must fight the forces of Adharma, because they will not leave unless they are defeated. If you just bow down to them, you are actually accepting a surrender. And Ram also did fight. Again, he tried not to. And his wife was taken. The assault was on him. He didn't go after anyone directly himself. So I don't really see a difference there in values. I see some slightly difference in strategy. And again, we don't live in a world where everything is ideal. Gandhian ahimsa did not work by itself. You had the movement of the revolutionaries, you had Subhash Chandra Bose, you had even Gandhi. He was very good as using a verbal kshatriya, because he at least did the critical factors. There's always his famous quote, what he thought of Western civilization, and he said it would be a good idea. Good idea. Yes. So obviously he wanted to continue a Bharatiya tradition in some ways. And ahimsa does not just simply mean non-violence. It means doing what is necessary to reduce or prevent
violence, which means doing what is necessary to reduce the forces of Dharma. Also, and think, India is such a big country. If the Mughals wanted to build a mosque, they had a lot of open ground they could use. They didn't have to go through the main Hindu temple sites to do it. If it was a matter of devotion to Allah, it didn't require that it's done in that one place. It can be done in so many places. So obviously there was other motives behind what they were doing. They certainly weren't raising secularism. They certainly weren't trying to say we honor all religions. They were saying we're asserting our political supremacy by humiliating a culture at its main cultural sites. Very well put there, Panditji. But my final question to you, are we as a nation on the right path, especially under the current leadership, Prime Minister Narendra Modi? You are definitely on the right path. You had the decades of the Nehruvian path. They didn't stop communal riots. They didn't bring peace. They didn't gain even the respect of Pakistan to go, to stay back and not attack. They also did not raise the civilization of India. They were essentially following a Marxist ideology in what they did, and the socialist economics was a disaster. The industrialists left Calcutta because of them. They lost power because of them. Their Soviet model did not raise India's economy, and it also didn't increase India's trade, and it didn't increase India's political respect in the world. I have to, it's a funny thing to say, but you have more pictures of Modi hugging major political leaders in the world and them hugging him back than all the Gandhis, I think, put together. And even those who may not be happy with India rising are forced to respect India. India is now at the forefront of ecology, also technology, spirituality, economics. Look at the infrastructure. How come the Nehru dynasty in so many decades couldn't build good roads in the country? Look at all the roads that have come up under not only Modi, but Nitin Gadkari, and the renovation of the country in so many ways. Ayurveda's come up because it's getting support. International Yoga Day has come up because of Modi. And so it's very important that as Bharat rises, Modi's brought more, electricity, water, gas to the poor, infrastructure, education accounts for the women. If all these groups had been supporting democracy and equality and raising the poor, they would have done it when they were in power. They just gave money to the poor at election time to buy their votes so they could stay in power longer. And then India remembers, don't worry about what the West is saying about India so much. They've always been critical. The colonialists are going to be critical to rule over you. And if India is rising, that's going to bother them. And India is going forward today. It is the only ancient civilization that has survived colonialists, missionaries, and all the rest of it. And it is one that still has a vision going to the future, because our future is universal, and it's not just democracy, it's honoring all of life as sacred, and as Upanishads say, seeing oneself in all beings. That's what the Hindus teach, not caste. Purusha Vedam Sarvam. The Purusha is everything. You are the universe. That Purusha, that self is you. Hari Om. Thank you so much. Thank you so much, Pandit Vamdev Shastri, Dr. David Frawley there, taking the right stand. Thank you so much. With that, we call it a wrap on this edition. Stay with us. Brass Tacks follows.
इस देश के 52 करोड़ लोगों को पहली बार बैंकों से जोड़ करके जली है। ये राम ज्योति मेरे भैया 4.25 करोड़ बेघर को उनको छत दे करके तो जली है। ये राम ज्योति 13 करोड़ लोगों के घर में पहली बार शौचालय बना करके इज्जत घर दे करके जली है। ये राम ज्योति 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया सालाना इलाज दे करके बनी जली है। इस ज्योति का कितना लौ होगा, जो ज्योति न जाने कितने लगभग 12 करोड़ माताओं की आंखों से धुआं हटा करके जली है। उस ज्योति पर विपक्ष को गर्व हो न हो, हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा साहेब, हमें रहेगा साहब। क्या बात है। तो जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप पर यह आरोप लगता था कि आप कह रहे हैं कि मंदिर तब बनाएंगे जब आप कुर्सी पर बिठाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 24 के लिए कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमें वोट बनाकर फिर से सरकार बनवा दो। वो प्राण सियासत भी ला रहे हैं इस आस्था वो प्राण प्रतिष्ठा में कभी नहीं आते। वो तो राम का प्राण हरने में विश्वास करते हैं, राम को प्राण देने में विश्वास ही नहीं करते हैं। अभी जो लोग भी आपके मंच पे आएंगे, जो इंडी अलायंस से होंगे, आपको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या दिक्कत है? 500 साल से राम जी के मंदिर को तोड़कर, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी। अगर आज का कानून उस समय होता ना, तो बाबर को फांसी की सजा होती। आप किसी दूसरे, आज भी मैं इस शो में कह रहा हूं, मैं एक सांसद के रूप में भी कह रहा हूं, किसका मजाल है जो किसी भी धर्म के किसी देवालय को गिरा दे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, क्या कोई तोड़ सकता है? हमारा कानून ऐसा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने में राम का सम्मान क्यों छूट जाएगा? Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching a special presentation on CNN News 18. I'm Shivani Gupta and I'm joining you live from Ayodhya. This is the city that is gearing up in less than 48 hours for the Pran Pratishthan of the Ramlala idol in the new Bhavya Ram Mandir. This moment is something that has been in the making for 500 years. Also, it has come after 4 years, almost 5 years of the judgment that came in 2019, which was a seminal judgment in itself. With this moment now, of course, the city is gearing up for a moment that is going to be remembered for a very, very long time. The Pran Pratishthan is being celebrated as a second Diwali in Ayodhya. There are a lot of programs going on, a lot of people who have come from all across the country to participate. They're contributing in whatever way they can, either by making arts or by organizing langars or bhandars all across the city. Anybody who wants to do anything is welcome in Ayodhya. But from now onwards, of course, the focus will shift on the ceremony and on the Prime Minister arriving on January 22. He's going to be the Yajman of the ceremony. Speaking of the Prime Minister, he's been holding an 11-day Anushtan ahead of this ceremony, and he's been going across to temples, especially in southern India, that have a special relevance as far as Lord Ram's story is concerned, the story of Ramayana is concerned, and his life is concerned.
What does that really mean? We'll focus on the symbolism of this moment in Ayodhya that is being celebrated as a national moment, and also how none other than the head of the secular state of India, the Prime Minister, is really leading this from the front. What does that mean for Indian politics? And not just because this movement has been inextricably linked to Indian politics, but for politics and Indian polity moving forward. All that will come with our special guest joining us in just a bit. But take a look at the sights and sounds around Ayodhya and how it is gearing up. स्वागत गाने गाए जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में डर जाएगी ना This moment of the Pran Pratishthan in Ayodhya is being celebrated as a national movement. With that is the political shift to the right complete in India. We'll take that forward with our guest joining us. I want to go across to Dr. Bharat H. Barai, who's chairman of the US-India Community Foundation and is a special invitee for the Ayodhya program. Advaita Kala, author and political analyst, George Kurian, political analyst, all joining us from outside the studio. I do thank you for your time. I also want to introduce the guests who are with me in Ayodhya. Swami Yogi Devnath is Dharmguru. He's come from Kutch in Gujarat, right? He's come all the way. He's going to be part of the ceremony as well. And Sarbhuj Gaur Das is president of ISKCON in Ayodhya. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. Dr. Barai, I want to come to you first up, but before I get to the topic I'm discussing today, whether we are seeing an irreversible shift to the right in Indian polity, I want to first begin by asking you your thoughts on the moment, on the occasion of January 22 that you have been invited for as well. This is a renaissance of Hindu civilization. We had a flourishing civilization for thousands of years, but during the Mughal rule and during the British rule, we were not able to practice our religion freely. After the independence in 1947, yes, Hindus were able to practice their religion. However, under the name of secularism, Hindus were very much constrained. In fact, I have to tell you, we are able to practice Hinduism better in USA than it was practiced for almost 50 years in India. But in last 10 years, under the leadership of Prime Minister Modi, who is secular, but he is also respectful for Hindu, and Hindu revivalism has started. It has started in USA, probably in UK, Australia, Canada, New Zealand, everywhere too. So I'm very glad that Hindus are taking their rightful place in the civilization and in the world. You know, we are seeing visuals, Dr. Barai, of the Prime Minister visiting many temples, ancient temples in southern India. He's just taken a holy dip in Rameswaram not too long ago, or even when Narendra Modi was elected in 2014, could people have imagined that the Indian Prime Minister will be seen wearing his religion and his divinity, his religiosity on his sleeve? But many people criticize him as well. What do you make of what the Prime Minister is doing, the symbolism of that, because he is head of a secular state, and the criticism that also comes his way? You know, this is a very wrong concept. Secularism means state does not give preference to a particular religion, but the president or prime minister or members of the parliament, they can practice it freely. In the United States, before the president takes the oath of office, in that morning they go usually to the church. Same way, the King of England, he is the one who is the head of the church. So in Europe or in USA, the president, the prime ministers, whosoever are the heads of the state, they go and attend the religious event. So yes, Nehru and his clan did not do it. They should have done it. This is a country where 80% or more population is Hindu. So Prime Minister Modi is doing very appropriate
by practicing his own religion. That does not mean that he is disrespectful to other people. So you're saying basically what we've been, of course, discussing for many decades in India, that there's a warped sense of secularism or a warped concept of secularism that was in practice in India. Advaita, your thoughts? You know, the Prime Minister visited the Ganges, took a dip in the holy Ganges. He's beating through the Rudraksh. He has done this before. He has been criticized before. He's doing this again today. He's observing an 11-day Anushtan. From the fact that he's even going to be at the ceremony to the fact that he's today visiting temples and openly talking about what this moment means for India, it's going to cause a little bit of heartburn to many. But do you believe that we have shifted away from that politics, that warped secularism or that pseudo-secularism politics, and it has been an irreversible shift now? Absolutely. First of all, Jai Shri Ram to you, Shivani. You're in Ayodhya ji, which is such a momentous time. So you are truly blessed to be there during this time. And Jai Shri Ram to my fellow panelists. I think this is a joyous occasion. It's a time of joy. It's a time of civilizational realization and renaissance, as was so rightly pointed out by our previous guest. And Prime Minister Modi has played an essential role in this, and the important role that he has played has been even on a subliminal and a psychological level. The kind of hesitance that we felt and that we were raised to feel in expressing our faith is something that he has shown through example of how you can do away with that. And I think that is a very powerful message for those of us who are practicing Hindus, but, have felt conscious in the past and have been made to feel conscious, and especially for the younger generation to see that you can believe in progressive ideals, in development, you can be the fastest growing economy on earth and yet be very rooted in your civilizational ethos. And I think that is the most powerful message that is coming from this occasion. And really, it's a message that is going to last for generations. And full gratitude to Prime Minister Modi for leading that with such dignity and resolve and fairness. And I think that has been the biggest example for all of us who are fortunate enough to witness this moment. You know, many believe, Advaita, this moment wouldn't have been possible if we hadn't had a BJP government for as long as we've had. I leave that question aside, but do you believe that this is here to stay? Has there been a shift that is irreversible, or if tomorrow a government was to change? But if tomorrow a government was to change, in opposition, a lot of opposition parties also play soft Hindutva. But in government, they don't do so. We've seen it recently in Karnataka, for example. Their agenda is very clear. So tomorrow, if a government was to change, are we going to slip back to left liberalism, pseudo-secularism? I think that ship has sailed, and it's sailed a long way off. That is why I emphasized Prime Minister's contribution to Hindu consciousness in this country and not necessarily the political play that this will have. Because I think what he has done has also enabled a shift in Hindu consciousness in India and in Bharat rather. And that this is something that is going to stay irrespective of political fortunes, whether they come and go. As for, the polity moving to the right, I think what has happened is that this pseudo-secularist idea of faith and the individual is something that has gone to the extreme left. It's become very negative. They have nothing positive to share. They're always looking down on being Indian, on being Hindu. And frankly, the public of this country has had enough of that. We're not here being triumphant, but we're here saying that a living civilization, and we have every right to embrace that and to acknowledge that and identify with it, most importantly. And I think this is the shift that the Prime Minister has achieved in the consciousness and the Hindu consciousness in this country. And I would not only restrict it to the dynamics of Hindu versus this faith or that faith. I would say Hindu as in a cultural and a civilizational identity which transcends faith. Yes. Many would argue, well before the BJP or the VHP or the RSS became influential, this movement has always been going on. This movement precedes them. So if it has survived,
post-independent shift to left liberalism and Nehruism, then it can survive any changes in politics too. And that Hindu consciousness you talked about was always there, possibly did not have the political voice to express themselves, which Narendra Modi in power gave because of its continuous run. But George Kurian, I want to ask you exactly this question. The problem with the opposition today is that it will visit temples, it will do parts, it will also organize pilgrimages in state governments, but they will just not participate in this function, they will not rejoice for what this moment means for India, despite the fact that they also play soft Hindutva. Very often they are indistinguishable from the BJP, but somehow they cannot digest this function. Well, good evening to you, Shivani, to my co-panelist on the show, and to the other guest on your side, and to your audience. Let me begin by saying that the opposition is not trying to play a soft Hindutva here. The opposition, be it the India bloc, have complete faith in Lord Ram. It believes in the Astha, and it like anyone else in this country. Having said that, the only reason why the opposition is showing resilience to the Pran Pratishtha of Lord Ram in Ayodhya at this point in time is because it has become a political event. So to say, because the Prime Minister is going to address the nation from there, and so be the UP Chief Minister. I would also like to point out that I respectfully want to disagree with Dr. Bharat Bharai here because he said that Hindus were constrained under the name of secularism post-independence, which is not true. Maybe he's based out of US or UK, I'm not very sure about it, but he doesn't know about the ground reality, what's happening in India. Under the Congress era, it carried every caste, creed and religion together. It was a secular front, and everyone felt very secular in this nation. Everyone was practicing their own religion and faith and beliefs. So to say that Hindus were constrained is not true. I also want to point out about Advaita here. She mentioned about Hindu consciousness in India post Modi coming to power in 2014, which is again untrue. Yes, I can believe that people with secular or the minorities were pushed to an extreme where they have that fear psychology. That is one thing that I can say that post 2014 that has happened in India. So I strongly believe that the Prime Minister carrying out the 11-day Anushthan is a good thing. Everyone should be God-fearing and should have that something in them that what they're, because it again believes it depends upon what their intent is. And I strongly believe that the BJP or be it the RSS is pushing this Ram Pran Pratishtha in Ayodhya to polarize the entire thing and to make it political. So that shouldn't be the case. Well, I don't think there is any polarization that exists anymore. Polarization existed as long as the dispute existed, but hopefully we can move on to that. And I will actually touch upon that point in the later half of that show. But I want to go across to our guest joining us here as well. Swami Devnath ji, आप कच्छ गुजरात से आते हैं. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स सेंट्रल सरकार करती है, वो पहले की सेंट्रल सरकार से बहुत डिफरेंट है. तो नरेंद्र मोदी ने इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे चेंज किया है? आपने तो गुजरात में उनको एज अ चीफ मिनिस्टर भी देखा होगा. तो उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि कुछ लोग उनकी उनको क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका सवाल उठाते हैं कि आप हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा देते हैं, जैसे वो मंदिर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं. तो क्या आप मानते हैं कि कोई भेदभाव हो रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहेव कर रहे हैं, सरकार बिहेव कर रही है, या सर्वधर्म सम्मान हो रहा है? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी एक खुद की अपनी आस्था है. उनका धर्म हिंदू है तो उसकी हिंदू रीति रिवाज की पूजा करनी पड़ेगी. वो हिंदू है तो अपनी पूजा पाठ करेंगे. वो उससे कोई किसी का लेना देना भी उनकी व्यक्तिगत है. प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत की कुछ भी आस्था होती है. और रही आपने बताया पॉलिटिक्स, पहले की पॉलिटिक्स हमने देखी है. ये देश हिंदुओं का है. इस देश प्रभु श्री राम का है. राम को एक छोटा बताने की बहुत कोशिश हुई, और वो 60 साल तक कोशिश हुई. इस देश में बाबर को बड़ा बताया गया और इस देश में राम को छोटा बताया गया. ये देश राम का है. तो पॉलिटिक्स जिन्होंने गलत चलाई थी, जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, जितना विपक्ष है, इन्होंने जितनी राम पे राजनीति की इतनी और किसी ने भी नहीं की. नहीं, इल्जाम तो वो ये लगाते हैं कि भाजपा करती है राम पे राजनीति. अरे भाई, राम पे उन्होंने की. उन्होंने 60 साल तक मंदिर नहीं बनने दिया. कारण यही था,
उनको एक जाति के अपने वोट चाहिए थे, राम मंदिर रोक के उनको वोट मिल रहे थे। और बीजेपी राम मंदिर बनाने के पक्ष में थी। क्यों? इस देश के प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इस देश का ये बाबर से कोई लेना देना नहीं जी। बाबर का इस देश से क्या लेना, प्रभु श्री राम का लेना देना है। तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का कल्चर क्या है, अगर उसके साथ आप खड़े हैं तो आप राजनीति कहते हैं, तो मुझे लगता है राजनीति इसको कोई हर्ज भी नहीं है, कहना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ। इस देश की संस्कृति के साथ में खड़े। जी, नो, यू आर मेकिंग अ वेरी गुड पॉइंट कि अगर आप देश की संस्कृति, देश के इतिहास के साथ खड़े हैं, तो क्या वो राजनीति बुरी राजनीति है, क्या वो राजनीति गलत राजनीति है? और उसको कम्युनल पॉलिटिक्स बोल देना और कम्युनल पॉलिटिक्स बोल के उसको नीचा कर देना, क्या ये सही बात है? आप बताइए दास जी, आपका क्या मानना है? आप इस्कॉन टेम्पल से हैं, आप तो पूरे विश्व में हिंदू कल्चर का, हिंदू फेथ का मैसेज ले जाते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या इंडिया की पॉलिटिक्स वाकई बदल गई है या सिर्फ अभी मोदी है प्राइम मिनिस्टर इसलिए चल रहा है, कोई और आएगा तो फिर नहीं चलेगा? नहीं, आपका कहना सही है, आपका बहुत धन्यवाद देंगे इस चैनल बुलाने के लिए। तो जो भारतीय जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह से लगभग चेंज हो गई है। कहा गया है कि शास्त्रों में यदि आचति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग, महाजन लोग चलते हैं जिस रास्ते पर, समाज उसी रास्ते पर चलता है। अगर राजा धार्मिक है तो पूरा देश धार्मिक होगा। धार्मिक मतलब ये नहीं दिन रात केवल पूजा करना। धर्म का मतलब होता है संसार में लोगों की उन्नति होना। धर्म से क्या आता है? अर्थ आता है, और धर्म से ही लोगों की इच्छाएं पूर्ता होती है, और धर्म से ही लोगों की तृप्ति होगी। तो जब राजा धार्मिक होता है तो पूरे देश में शांति आती है। और मोदी जी के कारण से मैं देख रहा हूँ पूरे देश में सभी लोगों के अंदर पाप की जो प्रवृत्ति है, चेतना, ये बहुत बदल रही है। हाँ, ये मोदी जी के गवर्नमेंट की एक कमाल है। मोदी गवर्नमेंट को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आकर के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, उनसे अगर इस नए युग को अगर अगले 10 साल 20 सालों तक अगर रखा जाए तो पूरा विश्व, केवल ये राजनीति की बात नहीं, पूरे विश्व को जो जगत गुरु कहलाना है, विश्व को ये जो धर्म की नीति है ये लेके जाए। इसको राजनीति नहीं कहेंगे हम, धर्म नीति है। धर्म मतलब जो राजा होता है राजनीति नहीं करता है, वो धर्म नीति करते हैं। तो लोग जो कहेंगे कि भारत तो सेक्युलर देश है, यहाँ पे राजनेता का और धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सरकार और धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो उनको आप कैसे जवाब देंगे? बहुत अच्छा आपको प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में जाकर देखेंगे तो जितने हमारे राजा हुए हैं उनके राज्य में कई जाति के लोग, कई तरह के लोग रहते हैं, सभी लोग सुखी रहते थे। युधिष्ठिर महाराज के राज्य जाके देखिए, उनके राज्य में सभी लोग सुखी रहते थे, क्योंकि जो धर्म नीति करता है वो कभी राजनीति नहीं करता है। धर्म नीति, जो सेकुलर जो शब्द है, इसको बहुत गलत तरीके से हमारे भारतीय संविधान में भारत के लोग मिस यूज किया गया है। ये बहुत बड़ा देश का लॉस हुआ है। क्या आज पूरा विश्व इसके पीछे, भारत के पीछे चलता, लेकिन आज इस सेकुलर के कारण पूरा भारत पीछे हो गया है। अगर इसको धर्म को आगे फैलाया जाए तो पूरा संसार आगे फैलेगा, ये मेरा विचार। जी बिल्कुल। Advaita, the question is exactly this, and you know, I think you did touch the right point, and I think George Curran is unwilling to accept that point, but it is true, George, that being Hindu or expressing your Hindu identity was looked down upon. That was Nehruvian politics. He despised it. Let's just face it. The Congress has to come to terms with that. And I'm not saying that everybody in the Congress does. Clearly, there are people in the Congress who are devout Hindus and who also stood up to Nehru at that time. Sardar Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad were there when Somnath was reconstructed. They were the ones who were helming it. Nehru was against it as the Prime Minister. But the Congress of today still cannot shed that socialist Nehruvian view of faith and religion, and particularly Hinduism, because I don't think anybody will buy it that the Congress is secular. Congress has done as much quote-unquote communal politics as any other party in India. But it is unable to shed that Nehruvism, which is possibly turning out to be its downfall as well. George. And then Advaita. Well, Shivani, I don't quite agree to what you just put forward for your audience at this point in time. I strongly believe that, you know, the Congress government and the Congress-led era, they carried everybody along, irrespective of caste, creed, as I mentioned earlier.
it believes in social fabric, and there's absolutely communalism. In the name of communalism, the Congress didn't play that to their advantage, I would say, and put it across. So I strongly believe that, we welcome the Supreme Court's verdict about, building up the Ram Mandir there. So we had no objection on that, because that's come through a Supreme Court order, and we welcome it. And, we also pray that, let this Pran Pratishtha and Lord Ram's Mandir in Ayodhya be a sign of peace and prosperity for the entire nation, the country, and Indians at large. And playing politics on the religious front is uncalled for at this point in time. So that is one thing. And so I strongly believe that, it's good to be God-fearing, and I hope that the intent of the Bharatiya Janata Party at this point in time through Ayodhya it's in the right track, and it's not to polarize and the large majority of Hindu votes. That is what I would like to put. No, but can I just ask you, what is the problem in the country, the government celebrating this event the way it is doing? Why do you call it politicization? Who else is going to helm a big program like this, if not the governments of the day, whether it's the state government or the central government? They will have to provide the backbone for a large function like this. Otherwise, it cannot be as large as this. How is that politicization? Well, very good question. Let me put it this way, that building up of Ram Mandir is not a problem. It's a welcome move, and the Prime Minister going and doing the Pran Pratishtha, the puja, is also no problem. It's only that the Prime Minister is going to address the nation, the UP Chief Minister is going to address the nation, the RSS Chief Mohan Bhagwat is going to address the nation. So that is going to give it a political color. Believe it or not, it is going to make a difference as far as vote bank is concerned. Galvanizing the Hindu majority voters is the main idea, because we are running up to the 2024 Lok Sabha election. Having said that, the Congress also at the same point in time, they have the Astha in Lord Ram like anyone else in this nation, over 100 million people. So that is one thing, and it's just a matter of individually, like I said, I don't think anybody can doubt the devoutness of the Congress people itself. But as a party, has it stood for Lord Ram? Let Advaita come in on that. Advaita, George made a good point about how the Congress party believes in social harmony and social fabric. But if I may say, that social fabric and harmony depended on Hindus being conceding, Hindus always conceding, while an exceptionalism being created for the largest minority for India. Now that's not harmony, that's an unlevel playing field. That is what people had a problem with. And I think the answer lies in the statistics itself. If you look at what has happened to minorities in Pakistan or Bangladesh, which were once part of India prior to 1947, you know exactly how post-independent, this post-colonial subcontinent has treated its minorities, how India has treated its minorities vis-a-vis how Pakistan and Bangladesh have. Even today, we get news constantly of Hindus being killed and victimized, and little girls being kidnapped, raped, married forcibly, converted. All of these things are everyday news. But somehow I feel that our polity, it does not look at that in that way. And if we have to look at this completely from the political lens, although I don't want to do that, especially on such an auspicious occasion, but just to keep it very generic, the only political party that has been consistent on the Ram Mandir has been the Bharatiya Janata Party. It has had the Ram Mandir mentioned in its manifesto from the late 80s. On to the present day, and they have delivered on their manifesto. It has been there. They have not been apologetic about it. They've never tried to hide it, and they have lost state governments. They have lost governments because of their support of the Ram Mandir. So they've paid a political price. They have also been demonized as communal for years and years. So they've paid that price, and if today they are part of the celebration, I think they've earned a place there. On the other hand, the Congress, right from the time of challenging the very existence of Ram in Supreme Court, to all kinds of statements that they have been making in the past, and even today by declining, Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge declining an invitation to the Pran Pratishtha, and not even saying when they declined the invitation that, okay, we consider this a political event, but we will visit post that. Please note, they've not said anything about going to Ram Mandir after the Pran Pratishtha either. They just said that we think it's too political. So this kind of
disdain and rejection of the feelings of so many Indians, of so many Astiks, is really something that hurts. It's hurtful at a time like this, but the Congress doesn't seem to get it. For Mother Teresa's canonization, when the Pope invited Sonia Gandhi, she was unable to go because she was unwell, but she sent representation. She wrote a long letter saying how she wished she could be there. So how can you have these double standards? No, absolutely. One could also argue that the reason the Congress deliberated whether to go or not for 2 weeks was because they wanted to deliberate what the political impact of them going is going to be. So they have also weighed in politics. They also possibly politically cannot be seen at this event, because let's not kid ourselves, the Congress has not supported the Ram Janmabhoomi movement. If it hasn't actively derided the movement or stalled the movement, it has definitely remained agnostic to some extent, and certainly under Congress governments it was not seen as a possibility that the Mandir will become a reality. Let me go across to Swami Devnath once again. लोग कह रहे हैं कि ये बहुत पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गया है, इसको धार्मिक प्रोग्राम नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, आरएसएस के चीफ आ रहे हैं, वीएचपी के लोग हैं, तो ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं रह गया, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गया और 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं। देखिए, इस देश में इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, हर साल आप देखते हैं कहीं न कहीं इलेक्शन तो चालू होते हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिक्स हो गया है कार्यक्रम। भाई प्रधानमंत्री कोई प्रोग्राम में नहीं जा सकते, उनकी व्यक्तिगत आस्था है। क्या मुख्यमंत्री कोई धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जा सकते? अच्छा, वीएचपी वाले कहीं धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जा सकते? आरएसएस वाले क्या धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जा नहीं, लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि आप ही कर लो, फिर आप ही को करना है तो हमें बुला के क्या फायदा, हम तो ये धार्मिक प्रोग्राम में नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं आएंगे। अरे भाई, मैं कहता हूँ श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रोग्राम कर रहा है, हमें आमंत्रित किया है, हम भी आए हैं, गुजरात से आए, हमें भी आमंत्रित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री को किया है, ऐसे मुख्यमंत्री को किया है, ऐसे वीएचपी वालों को किया है, ऐसे आरएसएस वालों को किया है। ये तो पहले क्या नाटक कर रहे थे, पहले तो ये कह रहे थे कि हमें प्रोग्राम नहीं, आमंत्रण नहीं भेजा है। जब इनको आमंत्रण भेज दिया तब ये क्या लगा, हम नहीं आएंगे। प्रभु श्री राम का जो विरोध करता है उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, आपने प्रभु श्री राम का मंदिर का आमंत्रण ठुकरा के, अगर आप नहीं आते तो कोई बात, कोई बोलना ही नहीं था, आपको आमंत्रण मिल गया, चुप बैठ जाते, आते। ये तो कांग्रेस को एक बड़ा मतलब लाभ मिलने वाला था, खाली आके दर्शन करके चले जाते ना, बहुत ही बड़ा इनको फायदा होने वाला है। लेकिन अपने कहवत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। इनका 100% इनकी पड़ती है, इनकी गिरती हुई है, ये दिखाई दे रही है हमें सामने। इन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया कि बोले हम नहीं आएंगे। अरे आप तो चिल्ला रहे थे हमें आमंत्रण नहीं दिया, इसलिए अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनके पास कोई लॉजिक है नहीं, इनके पास कुछ है नहीं, इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। ये बोलते हैं मंदिर मंदिर, आप भी मंदिर मंदिर जाते हो, लेकिन दुनिया ने आपको नकार दिया है, जनता ने आपको नकार दिया है। ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो लोग मानते हैं कि हाँ उनकी आस्था है, लेकिन अपोजिशन वाले जानते हैं तो वो नहीं जाते हैं, तो वो नहीं मानते लोग? देखिए, एक सच्चाई होती है, एक ढोंग होता है। तो ढोंग क्यों लगता है आपको? अरे वो ढोंग क्यों? अरे भाई, आप प्रभु श्री राम को नकारते हो और तुम महादेव के मंदिर में जाते हो। आप महादेव कहोगे, प्रभु श्री राम कहोगे, श्री कृष्ण कहोगे, भगवान तो हमारे एक है। आप श्री कृष्ण के मंदिर में जाना चाहते हो, प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं आते हो जी, तो ये सीधा साधा ढोंग नहीं है तो और क्या है, लोग आपको जान चुके हैं। जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ दास जी, आपने बोला कि ये जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है लोगों को समझ में आ गई, तो आपको लगता है कि आप जैसे जो धर्मगुरु हैं उन्हीं को समझ में आता है ये, लेकिन क्या जमीन पे जो व्यक्ति है क्या उसको भी समझ में आ गया है कि जो सेक्युलरिज्म की हमारे देश में बात होती थी, जो प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी सेक्युलर शब्द ऐड कर दिया गया 1970s में, तो वो सेक्युलरिज्म एक जो पाठ पढ़ाया गया है, हिंदुओं को पढ़ाते हैं वो पाठ, और तो किसी को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते नहीं है, तो वो जो हमें पाठ पढ़ाया गया है वो उस पाठ की हमें जरूरत नहीं है। एकदम सही बात है। उस पाठ क्या लोगों को ये बात समझ में आई है? जमीन धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया है कि जो सेकुलर शब्द है, जो हमारे
संविधान में ऐड किया गया है। सेकुलर का मतलब ये समझना चाहिए कि जो सभी धर्मों को समान वैल्यू देता है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी किसी धर्म को किसी को मना नहीं करते हैं। जो भी धर्म आता है, जो भी जिनका भी त्योहार आता है, उनको सम्मान देते हैं, उनको विश करते हैं। लोग ये समझते हैं क्योंकि योगी जी तो खुद ही योगी हैं, मोदी जी भी बहुत हिंदू आस्था रखते हैं। लोग ये मानते हैं कि वो किसी का चाहे बुरा नहीं करते हो, लेकिन भारत में उनके अंडर अब हिंदू ऊपर हो गया है, बाकी लोग नीचे हो गए हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। देखो, लोगों के अंदर लोगों को सोचना कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप सोचोगे कि मेरे साथ ये हो गया, नहीं। मोदी जी किसी को अपमान नहीं किए हैं। और हिंदू धर्म ये भारत के प्राण है। ये धर्म, ये कोई इसको जैसे आपके प्राण को कोई छीन ले तो आप कहो कि ये जिंदा रह पाओगे। ये जो राम जी है पूरे भारत के प्राण है। आप प्राण को छीनोगे तो कौन बचा सकता है? राम तो आप जी कह रहे हैं कि हिंदुइज्म को धर्म की तरह ना देखें और बाकी धर्म से कंपेयर ना करें, इसको देखें कल्चरल और जो सोशल हमारी जो एक कोहेजन है उसको देखें। ऑन द टॉपिक ऑफ सोशल कोहेजन, we will discuss on the other side of the break whether the Ram Mandir, which was one of the longest disputes running in India and created a lot of tension, that dispute is over. With the ending of that dispute, will this bring in a new era of cohesion? There are some other key disputes going on when it comes to temple sites. Could it lead to a resolution there as well? That's an issue I will discuss with our guests after a very short break. But speaking of the changing times, there was a time in the 1990s, not many knew when the Ram temple will become a reality. Today it is so, it wasn't so fashionable to believe it then. But even at that time, the VHP had run a movement, not just from inviting donations as it did through the trust now, but even stone work had started for the Ram temple, which they had envisaged way back before anyone knew that this was going to be a reality. I visited the Karyashala in Ayodhya, where a lot of these stone pillars are being carved for the last many decades, and people still come there to click photographs and to visit that Karyashala. I leave you with that report. On the other side of the break, we'll be back with our guests. Long before anybody could have imagined or predicted that the Ram temple was going to become a reality or when it was going to become a reality, there have been countless such workers working in the Karyashala in Ayodhya. From the 1990s, stone has been sent to this Karyashala, started by the VHP back then, and work on such pillars of the Mandir has been ongoing. At that time, nobody knew the date, but everybody had the faith that the Mandir will become a reality. In fact, the architects of this temple had designed the Ram temple design way back in the 1990s. It was even popularized by the VHP on their booklet. It was presented at a Kumbh. And today's design has only expanded on the design that was first made in 1990. Let me speak to this worker here. भैया, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। तो आप इस कार्यशाला में कब से काम कर रहे हैं? साल भर हो गया। अच्छा, अब तो मंदिर पूरा बन ही गया है। यहाँ का जो पत्थर है ये बहुत सालों से यहाँ पे आया हुआ है और इस पत्थर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। पत्थर को भी इस्तेमाल किया जाएगा जी। तो आपको क्या बताया गया है? आपका काम चल रहा है तब से वैसे ही? काम चल रहा है हमारा, चालू है। आज जब मंदिर बन के तैयार होने वाला है उस पे कुछ कहेंगे? क्या आपके मन में क्या ख्याल है? मंदिर अब बन गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। खुशी है हमें, जल्द से जल्द हो जाए। Stone has been coming to this Karyashala in Ayodhya since the 1990s. At that time, the movement was at its peak. It obviously lost a little bit of its fervor since then, post the mid-1990s, but work here in the Karyashala has never stopped, and special care has been taken that all the stone that is there in this Karyashala is still used in the construction of the Ram temple. The VHP and the architects have made sure that this stone, that many people have come here over the years to visit when there was no mandir, and many people used to come here and even worship these stones because at that time there was no Ram temple. But their belief was that this stone will become the Ram temple. So special care has been taken by the VHP and the Teerth Kshetra Trust today to make sure that this stone does not go waste. All of this stone eventually will be used in the construction of the Ram temple.
Even today, there are a lot of people who are coming to this Karyashala, who are actually clicking their pictures with this. There is still a lot of faith and devotion associated to these stones. And there was a time when people used to come here and worship these stones because there was nowhere else to go and worship. That's really the story of the faith associated with the Ram temple, which is today becoming a reality. With camera person Nitin in Ayodhya, Shivani Gupta, CNN News 18. चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, उदर भूख सबकी बुझाता। राही का तरवर, प्यासे का सरवर, सकल प्राणियों का जो दाता। कष्टों का करता है जो भंजन, महादेव करते हैं जिनको नमन। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान। वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। न्यूज 18 के भी राम है। आपने भी बहुत सुंदर भजन बनवाया है। मैं सुना मैं इसको। देखिए हमने तो बस इतना कहा है कि पल पल में, युग युग में, कण कण में राम, हर क्षण में, हर तन में, हर मन में राम। प्रणाम सिया राम, प्रणाम सिया राम। ये जो आपने प्रणाम कहा ना, ये प्रणाम कहा था जनकपुर ने। जब ससुरारी में आए राम, हम उसी धरती के एक वासी, मेरे तो पहुना है श्री राम। हम हंसते हंसते पहुना को कुछ हंसी सुना भी देते हैं। हमसे बखान के करी भैया, हम राम जी को कभी कभी गरिया भी देते हैं। हम तो जनकपुर वाले हैं ना भैया। प्रणाम प्रणाम राम, ये सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मिथिलांचल में राम जी को कैसे उनका स्वागत, उनको मंगल न कौनो भयो राम के बियाह नियर, सुनली नहीं कान से न नैना निहारी हैं। हमसे बखान के करी हो राम रघुवर के, हम त राम पहुना के रोज देत गारी हैं। हम तो बसिंदा हैं जी राम के ससुरारी के, सिया जी हमार बहिना, राम पहुना हमारे हैं जी सरकार। हम तो पहुना भाव में रहते हैं। पर अब थोड़ा सा एक सियासी रंग इसमें क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो आस्था का तो विषय राम है, पर राम राज की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें विकास, हर किसी को, किसी के घर में अंधकार ना हो, किसी को भी रोटी की दरकार ना हो, इस तरीके का राम राज्य की परिकल्पना हम कहते हैं, मानते हैं। तो क्या वो हो रहा है? पिछले 9 साल में ऐसा दिख रहा है? नहीं, थोड़ी सी नजर घुमा लीजिए। आज आपके कार्यक्रम का नाम है अयोध्या पर्व राम युग। राम जी की ज्योति स्थापित होने जा रही है। 11 दिन का एक अद्भुत यम नियम के साथ प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं।
जमीन पे सो रहे हैं, अपने खाने से पहले गौ माता को खिला रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यम नियम का कठिन पालन कर रहे हैं। और याद रखिए, मैं तो न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहूंगा, ये जो राम ज्योति है ना, केवल घी और दिया से नहीं जली है। ये राम ज्योति इस देश के 52 करोड़ लोगों को पहली Welcome back. The Ram Mandir is becoming a reality, and as you've been hearing, it's after a struggle of nearly 500 years, and it's been one of the longest battles in India, longest disputes, one of the longest running court cases in India. At least 100 years when this case has been fought in Indian courts, more than 100 years. Now that it is a reality, one of the largest disputes or the biggest disputes between two communities in India is finally settled. Can the new Ram Mandir also usher in a new era of cohesion in India, especially on religious lines, is what I want to take forward with our guest. Rashmi Sawant is joining us. She's an author and of course a political analyst. George Kurian continues to be with us, and also our two guests with me in Ayodhya. Rashmi, welcome to the show. I want to begin by asking you, one of the largest disputes over. Will the way this dispute was settled, the fact that no heavens broke loose, nobody has really been hurt because a Ram temple is being built, everybody is only rejoicing. In fact, several communities are prospering. Do you feel that this could set the template for some of the other tricky disputes in India also to maybe move further to a more harmonious resolution? Well, Shivani, firstly, I think the Ram Janmabhoomi movement and the way that it was resolved sets a template worldwide. We all know about Jerusalem and how three sort of major religions of the world have fought over it, and there has been no resolution till date for it. So I think the Ram Janmabhoomi actually sets a template, and the fact that the pen is mightier than the sword is what the Supreme Court of India established when it gave its landmark judgment. I do believe that the same template needs to be followed in other conflicts as well, including the Krishna Janmabhoomi case and the Gyanvapi case, and that we can, not only bring justice in our own land for the indigenous people of our country, but also set a template as to how conflicts around religious lines, which inadvertently do become political, can be, in fact, solved amicably. And that I hope that, even Jerusalem can take a page out of the book from how India's led the way in this matter. And the land of nativity, I think we all do agree, is more pious and more special than any other land or any other place of worship. And the very fact that it is Janmabhoomi of Bhagwan Ram is enough to kind of underline the importance of this occasion, which I'm sure is being seen in every street all across the sacred geography that we call Bharat. Only yesterday I was at a national institute to deliver a talk, and all of the engineering kids were chanting Jai Shri Ram, and it's a pleasant change from our socio-political setting for the past couple of decades. मैं यहाँ पे दास जी के पास भी जाना चाहती हूँ. थोड़े से मुद्दे और भी चल रहे हैं देश में. आपको लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ है, बाकी भी हो जाएंगे? एकदम होंगे, 100% होंगे. जब राम जी आए हैं, राम जी ने समस्त अवगुणों को, समस्त दोषों को खत्म कर दिए. तो जिस राम जी के आने से सबके हृदय की जो मलिनता है, गंदगी है, दैट विल बी डिस्ट्रॉय. दिस इज माई कंसर्न, दिस इज माई फुल गारंटी कि उनका जितनी गंदगी खत्म हो जाएगा, और जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं अब धीरे धीरे उजागिर होंगे. जब उजागिर होंगे तब धर्म की स्थापना होगी. जी, तो आप मानते हैं स्वामी जी कि राम मंदिर से जो सौहार्द है वो और बढ़ेगा ही? जो सौहार्द थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि बहुत दंगे भी होते थे, बहुत लड़ाई भी होती थी समुदायों के बीच में, लेकिन अब राम मंदिर जब से वर्डिक्ट आया है तब से कोई कुछ नहीं, मतलब सब साथ में मिलके चल रहे हैं.
कुछ पॉलिटिशियंस इधर उधर बोलते हैं, कुछ धर्म नेता इधर उधर बोलते हैं, लेकिन कम्युनिटीज में बहुत सौहार्द है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर से और सौहार्द बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और दूसरी बात ऐसे है कि हमने राम मंदिर बन रहा है तो ये संविधान के अनुसार बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, किसी की जबरदस्ती से नहीं बन रहा है। तो राम मंदिर बनने से प्रभु श्री राम तो सबके हैं, प्रभु श्री राम को जो मानेगा वो सबके हैं। प्रभु श्री राम ने दुनिया को एक मैसेज दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए। उन्होंने पिता की इज्जत की, बेटे की इज्जत की, भाई की इज्जत की, पत्नी की इज्जत की, सबकी इज्जत की, हर को आश्रय दिया। तो प्रभु श्री राम तो जब देश में विराजित हो गए, अभी 22 को बैठ जाएंगे, विराजित हो जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं देश में एक बहुत बड़ा भाईचारा का संदेश जाएगा। और मैंने पहले जैसे कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे हमें वोट मिलेंगे, भड़का के वोट मिलेंगे, वो दिन लद गए, वो दिन चले गए। हाँ, वो दिन वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जॉर्ज कुरियन, there used to be a lot of doomsayers in India. One, I remember, if Modi becomes Prime Minister, the country as we know it will end. We've seen 10 years of it, no heavens have fallen. Ram Mandir is a reality, no heavens have fallen. India hasn't inexplicably changed in a manner where anybody is being hurt. It's just that it is rightfully claiming its civilizational roots, which shouldn't hurt anybody. And frankly, many members of the Muslim community also have no problem in it. Famously, Muslims were willing to resolve the Ram Janmabhoomi issue also, but it is certain people from a certain background that insisted that they must not give up. But with this case now being resolved, surely we can make a new beginning, where we need not use this, to keep ourselves above somebody else or for one upmanship. George Kurian. Well, Shivani, let me make it or reiterate it for the benefit of your audience that the Congress party is neither anti-Hindu or neither anti-Ram or be the India bloc as united. We strongly believe in the Asta of Lord Ram and we have no issues. We welcome this Pran Pratishtha of Lord Ram in Ayodhya, which is a good thing happening, which will bring in peace and prosperity for every Indian, every individual in this nation. Having said that, the Congress party has gone a step further where they haven't issued any circular with respect to, the Congress leaders should not visit Lord Ram for Pran Pratishtha. So they have left it open for the individual to take that call. Any Congress leader can be part of the Pran Pratishtha. So that is something that the Congress party has also showed resilience to. And here I strongly believe that the invitation from the Ram Mandir Trust to the Congress party, being a principal opposition party in this country. The larger question that I was trying to ask was, how do we build on this and how do we move forward for it? Forget the Pran Pratishthan, right? The Congress doesn't want to be part of it. It's not the end of the world. But we do have life to live after this as well. And there are some sticking points which we need to address. Can we come together as a community and do that? Or will the playbook that was used in the Ram Janmabhoomi episode be replicated, is the question to be asked. One would hope certainly that with the way that the Ram Janmabhoomi episode has gone, with the way it has been resolved, people will realize that yes, some of these holy sites can be reclaimed and no heavens will fall and nobody will become a second-class citizen or anything. I want to leave it on that message. I do thank all of our guests for joining us. But speaking of the Pran Pratishthan, we've seen the new idol that has been, whose picture has been released. I spoke to Dushyant Sridhar earlier, who broke down the significance of the motifs on the new Ramlala idol. Do watch that. Thanks a lot for joining us. Vedic speaker and scholar Dushyant Sridhar now joining us. Dushyant ji, we are seeing the description of the Ramlala idol, the new idol, Sham Varna idol created in black granite that has the Dasha avatars, the 10 avatars of Vishnu also adorning, the whole pillar besides the Ramlala. I want you to talk about the significance of the Dasha avatar. Namaskaram Shivani and Namaskaram to all the viewers. Now that we are all ready to witness the beautiful event that's going to happen on the 22nd of January, the Moola Murti of Lord Sri Rama has arrived. And from what I see as visuals that appear in the media, it is a beautifully sculpted Murti of Prabhu Sri Rama Murti of Ramachandra, and it has been done by the Shilpi Yogi Raj.
When we look at Rama here, the hair tresses are curly and they exactly match the description given in the Valmiki Ramayanam, where Valmiki says, Kakapaksha dharam veeram jeshtham me datumarhasi, Kakapaksha dharam. So he had curly hair tresses. And you see, of course, since he's Balarama between the age of 5, 6, 7, you see those chubby cheeks. So he could be a Kaumara, Pauganda and so on. So, but he looks very handsome. Now coming to the Prabha, the arch that carries the images of Dashavataram. Of course, the word avatara itself means to come from the top to bottom, wherein the Lord chooses to be amidst us. And there are plenty of avatars which are attributed to the Lord. Of course, our Purvacharyas, our preceptors have chosen a set of about 10 avatars which is referred to as Dashavataram. In that we have Ichha Meena, we have Matsyavataram. Matsyavataram signifies the retrieval of the Vedas. So when the Vedas were lost, the quintessence were lost, retrieval of it is referred to as Matsyavataram. When the wealth was lost, be it Kalpaka Vriksham, Kamadhenu, Uchchaishravas, Chintamani and so on, the Lord incarnated as Kurma, Kachapa. Then comes the avatara of Varaha. Varaha or Sukara means the avatara that brought back the glory of Mother Earth. So, Shweta Varaha Mahishi says Vedanta Deshika. Then comes the very, very thunderous of all avatars called Nrisimha Avataram. Satyam Vidhatum Nija Bhritya Bhashitam. To exemplify the words of his very dear devotee called Prahlada, the Lord chose to emerge from a pillar that tore open or broke open like a dicotyledon, and he emerged in the form of Nrihari, a combination of Simha, which is lion, and Purana Purusha, the form of the Lord's body. So, Akantham Adi Purusham Kanthiravam Uparikunthitaratim, says Vedanta Deshika. So, we have Nrisimha Avataram. Then came the very beautiful Vamana Avataram. As a dwarf he came. So, this dwarf signifies Vamana, and when he went to the Yajnavatika of Bali Chakravarti, who performed the yagam by the banks of river, the northern banks of river Narmada, in a place called Bhrigu Kacham, which is today called Bharuch in Gujarat, the Lord sought some land, 3 measures of land. The king, out of sheer arrogance, said, how much ever you want to measure, you can measure. And the Lord measured the worlds and finally brought down the arrogance of the king Bali Chakravarti as well. Then came Parashurama Avataram. It has large references to Madhya Pradesh region, because we had a king called Kartavirya Arjuna who belonged to the Haihaya clan, and he was housed in a place called Maheshwar, from where we get the famous Maheshwari silk. So that is when, to avenge the death of his father Jamadagni, Parashurama wants to bring down the arrogance of Kartavirya Arjuna and has a huge war with him. Then comes the greatest of our avatars called Rama Avataram. In Rama Avataram, the Lord wanted to establish Dharma. So he is called Dharmo Vigrahavan. He is the personification of Dharma. Then comes Krishna Avataram. We have 2 avatars. One is Balarama Avataram. Second is Krishna Avataram. Balarama was the elder brother to Krishna. And Balarama does not have a huge role except in a few instances. Whereas when we come to Krishna Avataram, Krishna Avatara is yet another avatara that gives the essence of the Upanishad. Sarvo Upanishado Gavaha Dugdha Gopalanandanaha Partho Vatsaha Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahat. So he gave the essence of the Upanishads called Bhagavad Gita. And then we have the Kalki Avatara, which is set to appear only when corruption and malice reaches its zenith. So it seems we are living in the best of the times. Then there is something very interesting where Buddha is also included. Many people have this question, why Buddha? Buddha historically refers to the 5th century BCE Buddha, Gautama Buddha. But we have had 4 other Buddhas, which many of the Sautrantikas and the Yogacharas in the Buddhist religion also agree who existed. In fact, in the Ramayana, we have the word Buddha as a reference when Rama listens to the speech of Jabali. And there are a few namas in Vishnu Sahasranamam like Ratnanabaha, Sulochanaha that are attributed to Buddha. Though the tenets of Buddhism may be diametrically opposite to Sanatana Dharma,
Later, the Acharyas have also included Buddha as one of the avatars, Amsha-avatars of Vishnu. So it has been sculpted. Then we have two other people who are fervent servants to the Lord. One, during the Rama avataram, it was Hanuman. And second, Garuda, who is present in all avatars. Even in the Rama avatara, in Yuddha Kanda, he comes and retrieves Rama and Lakshmana from the poisonous snakes. So these are extremely two important pillars of devotion in Sri Vaikuntham. So they have been sculpted in the Prabha. So you can see a Hanuman and you can see a Garuda. And then you can also see some of the symbols that are very sacred and regarded very holy in Sanatana Dharma. One is Pranava, which is Omkara. It has A, U, Ma. So this makes Om. So Om, which is Pranava, has been inscribed. The other symbol, which is not very prominent in some of the eastern parts of the country and not much in the southern part of the country, but which is very important to the rest of the country, is the swastika symbol. So the swastika symbolizes something which is auspicious, good, Shubha Labham. When Krishna says, a yoga kshemam bahamyaham, whatever you want to achieve, you will achieve, and whatever you have achieved will stay with you. So this auspiciousness, what India desires, is indicated through swastik. So we have Pranava, we have swastika, we have Hanuman, we have Garuda, we have the Dashavatara, we have of course the incomparable image, the Murti of Prabhu Sri Ramachandra holding the bow and the arrow. Something very significant, Shivani, is there has been space given for the bow to come and the arrow to come. So there could be two ways. Either the bow and the arrow could have been made as detachables in Krishna Shila itself, or they could be keeping golden bow and golden arrow. That is another possibility, because when there is space given, generally another metal is also allowed. And of course the Utsava Murti is going to be the Ram Lalla, the very little Ram Lalla, who is being worshipped for many decades together now. So overall, Shivani, I feel both the Shilpi is blessed, and what we are going to witness on the 22nd of January, we don't have a comparison to it, and it will remain unsurpassed and unparalleled in the history of Bharatadesham post-independence. जोड़ करके जली है। ये राम ज्योति मेरे भैया 4.25 करोड़ बेघर को उनको छत दे करके तो जली है। ये राम ज्योति 13 करोड़ लोगों के घर में पहली बार शौचालय बना करके इज्जत घर दे करके जली है। ये राम ज्योति 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया सालाना इलाज दे करके बनी जली है। इस ज्योति का कितना लौ होगा, जो ज्योति न जाने कितने लगभग 12 करोड़ माताओं की आंखों से धुआं हटा करके जली है। उस ज्योति पर विपक्ष को गर्व हो न हो, हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा साहेब, हमें रहेगा साहब। क्या बात है। तो जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप पर यह आरोप लगता था कि आप कह रहे हैं कि मंदिर तब बनाएंगे जब आप कुर्सी पर बिठाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 24 के लिए कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमें वोट बनाकर फिर से सरकार बनवा दो। वो प्राण सियासत भी ला रहे हैं इस आस्था। वो प्राण प्रतिष्ठा में कभी नहीं आते, वो तो राम का प्राण हरने में विश्वास करते हैं, राम को प्राण देने में विश्वास ही नहीं करते हैं। अभी जो लोग भी आपके मंच पे आएंगे, जो इंडी अलायंस से होंगे, आपको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या दिक्कत है? 500 साल से राम जी के मंदिर को तोड़कर, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी। अगर आज का कानून उस समय होता ना, तो बाबर को फांसी की सजा होती। आप किसी दूसरे, आज भी मैं इस शो में कह रहा हूं, मैं एक सांसद के रूप में भी कह रहा हूं, किसका मजाल है जो किसी भी धर्म के किसी देवालय को गिरा दे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, क्या कोई तोड़ सकता है? हमारा कानून ऐसा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं,
लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने में राम का सम्मान क्यों छूट जाएगा? Mr. S. Gurumurthy, who is the editor of the Tughlaq. He is also, viewers, an ideologue and an author, and as I told you, viewers, has been intrinsically involved in this civilizational battle. Now, I am very honored to have you with us, Mr. Gurumurthy. You, of course, require no introductions. I want to ask you some basic questions tonight. And please pardon me if I sound very simplistic, but sometimes those are the easiest questions to supply complex answers to. So, Mr. Gurumurthy, how should ordinary Indians view the January 22nd Ram Lalla Pran Pratishtha in Ayodhya? Is it, viewers, as many have claimed today, and Mr. Gurumurthy, a political event, or is it really about reclaiming India's civilizational history? See, as someone who was very closely involved with the Ram Temple movement from 1980s, it is something which we imagined would be the civilization revival of India. But the entire secular polity stood against it. It was a massive challenge. Looking back and looking at where we stand today, see, unless you have an overview of what happened in the last 4 decades, you will not be able to understand the significance of this great moment. So, I recall that the movement is being reduced to just a political movement. It has been there for 400 years. You must have heard recently the in 50 villages around Ayodhya, the Suryavanshis, they had given up wearing the
turban. Turban, yes. Till the Ram Janmabhoomi is recovered and the temple was rebuilt. 400 years they did not wear the pagadi. They have started wearing now. You can understand how ordinary Indians reacted to the destruction of the Ram temple at that time, and from then onwards, continuously there have been efforts to recover it. This is historically recorded. There were military attempts, there were diplomatic attempts. In 1934, there was an armed rebellion in which many were killed. And in 1885, a British judge recorded, when a case was filed for its recovery, he went and saw, and he said it is so sad that Babur should have built a mosque on a site held nearby Hindus. But I cannot give any legal remedy. So far, time has moved. You know, all this is completely whitewashed. And as if the mosque has been demolished to build a temple, it was never a mosque. In 1885, the judge records that it is an unoccupied building. There was nobody. In 1934, there was nobody. And it has been in disuse. The government of India records show that it was a disputed structure. But suddenly, in mid-1992, the government of India declared it was a mosque. That is how the whole world, India, Muslims, were told that a mosque is being targeted. You can understand the conspiracy. I mean, we were all witnessing what was happening at the time. We were all seeing how an anti-Hindu, anti-national, anti-truth narrative was being built at that time. And we fought through the whole thing. And of course, history moves in a very strange way. It doesn't move as politicians want, as even historians want, as media wants, as intellectuals want. It moves in its own way. This is what Arnold Toynbee said. In 1957, he warned that don't keep provocative symbols of invaders because it's an eyesore. There is bound to be reaction. And he also showed the example of the Polish government demolishing the Russian Orthodox Cathedral in the center of Warsaw. And he went 2 days after it was destroyed. The Russian occupation resulted in the center of Warsaw being turned into the Russian Orthodox Cathedral. It isn't Christianity. It is Russia versus Poland. Poland demolished the Russian Orthodox Cathedral and built the Roman Catholic Church. And this demolition was given running commentary over the Polish radio. This is what Arnold Toynbee says. This is how history reacts. And he said that the Ayodhya, Mathura and Kashi, these three so-called religious structures are not religious structures. They were symbols of domination over India. And he said, of course, you Indians are keeping it. And he paid a left-handed compliment for this. But the entire narrative built on false stories, vote bank politics, I mean, this resulted in huge consolidation of all nationalist forces. And maybe that is the will of the divine. There was no other way nationalist forces would have joined together. Well, and so I view the Ram Temple movement. Okay, let me ask you, Mr. Gurumurthy, we are often assailed by anti-Sanatana hate from some quarters in the south.
especially in Tamil Nadu. But the Prime Minister is carrying blessings from Lipakshi in Andhra Pradesh and a message of devotion tomorrow from Guruvuru to Ram, who is Sanatana's Maryada Purush. How does one decode this upsurge in devotion for Ram in the south, where you belong, where you hail from? See, Dravidianism was political and it was promoted long before India attained freedom. It was to divide India. A racial theory was invented, and after, as it slowly turned against Hinduism via anti-Brahminism. I can tell you there is a community, the most powerful and most, what I can say, numerically strong community is the one-year community. And that regards itself as the one community which protected during the Mahabharata the hidden arms of the Pandavas during their Ajnatavas. And it was hidden in a Vanni tree, and they safeguarded the Vanni tree, and that is why they are called Vanniers. This is what their Purana says. So, in Tamil Nadu, there is intrinsic relationship between Ramayana, Mahabharata, and the local literature. You know, the earliest Tamil literature speak of Ramayana, Rama, Sita, and they were all Sangam literature 2,200 years ago. Purananuru, Agananuru, the Silappatikaram, Manimeghalai, these are all the oldest Tamil literature. Remove them, there is no Tamil. They speak of Rama. And you see Rameshwaram as the core center of Rama Bhakti. And Dravidianism is purely anti-national movement which targeted the Hindus, which targeted the North, and that doesn't represent the beliefs, feelings, emotions, and the way of life of the Tamil people. If you see, I travel throughout the country. If there is any state which is most Hinduized in terms of belief, practices, traditions, value systems, family, role of women, and the respect that the youngsters have for elders, now is Tamil Nadu. So Dravidianism is a political distortion in Tamil Nadu. Okay. It has nothing to do with the Tamil people's beliefs and way of life. So let's shift focus just a bit, because there are other manufactured arguments, but one of them is a very direct charge. What do you make of the claim, for example, that January 22nd event is a Modi event and therefore it is legitimate to boycott it, sir? If you look at what happened in Somnath in 1951 and in 1947, the Somnath temple reconstruction started, and it was initiated by a cabinet resolution of the Free Indian government headed by Pandit Nehru. He may not have liked it, but the entire cabinet wanted the government of India to build the Somnath temple. Yes. There was a mosque in that place. Yeah. It had to be removed. It was removed. Why it was removed? Because Patel and Munshi met Mahatma Gandhi and said Somnath has to be built. Gandhi had written in 1925, if I remember right, in February in Young India, which Balbir Punch quoted in his latest and brilliant book which he has written, that if a mosque was built on a Hindu land, the Hindus can demolish it. It was Mahatma Gandhi's words. And that was why the masjid was removed, temple was built, the government of India offered to fund it. Mahatma Gandhi said, don't fund from the government, it must be by the people. And after Patel passed also, the government carried on the job of building the Somnath temple. And it was Rajendra Prasad who declared the temple open. He participated in the Prana Pratishtha.
Was it a Congress project? Was it a political project? Was it Rajendra Prasad project? The whole movement for Ram Temple was carried on by people, and the people whose representative who carried on the struggle, and those people's representative is the Prime Minister. That is the fortune. It is not Narendra Modi in his personal capacity. He represents the movement which led to the construction of the Ram Temple, change in the polity. And this whole thing has been endorsed constitutionally by a unanimous judgment of the Supreme Court. And the law to acquire the land for the Ram Temple was passed by the Congress party in 1993. And that was implemented by the Supreme Court. They said that land is already available. Now you hand it over to the Hindus after having found that there was a temple beneath the mosque which was demolished. And so it all happened by a convergence of historical forces, political forces, constitutional forces, and the Supreme Court judgment sealed it. And it is a project which is a convergence of the entire Indian civilizational, political, constitutional, and state forces. And the Prime Minister represents it in more than one way. As Prime Minister and as a person who represents the movement that brought the temple into existence against insurmountable odds. The whole world was told the Hindus have demolished a mosque, which is fake, which is false. And Hindus had to bear that bad name because of our own political divisions, the wrong narrative, false narrative, left narrative. The Hindus had borne so much pain and difficulties, and it is that movement finds its representative in power. That is moral and constitutional authority to be part of and lead the Pran Pratishtha. Well, Mr. Gurumurthy, I have to commend you tonight because you have come up with factual arguments. All arguments are fact-based, very persuasive arguments, viewers. And I sincerely hope that all of you will spread the word. Please retweet these clips, very important, or somehow spread them through the larger national ecosystem. Viewers, Ayodhya is awaiting its pratishtha, quite literally. It's not just the Ram Lalla idols. What does Ayodhya mean for Bharat? Let's speak to Amish Tripathi. He needs really no introduction. He's a diplomat. He is also an author. He has written bestsellers. He has a view, and an intelligent one. And therefore, let's open this up. Bhaks await January 22nd. One of them is Mr. Tripathi. Let's decode this renaissance that is going to happen right before our eyes. Ayodhya's rise and Bharat, what does it actually mean? It's being billed as the Nagari of Nyay. Now, Mr. Tripathi, thank you very much for speaking to me on the hard facts. Ram is described as a universal symbol of inclusivity. Can you elaborate on this? Look, it's very easy to be inclusive to those who are your own. Right. The point is, how do you behave with those who are not your own? Who are not from your family, who are not from your own community. We see many examples of that in all versions of the Ram. We are all aware of course, across India and across communities with Nishad Raj, with Ma Shabri, how inclusive Lord Ram was with his kingdom. At times, he was more inclusive with the people of his kingdom than even at the cost of his own family, right? But I think the true example of inclusivity you see if how an individual behaves, or how a god or any person behaves with those who oppose him, right? Look at the way Lord Ram behaved with Ravan's family.
even after Ravan's death, right? With Vibhishan, with the entire, they were all treated with respect, right? Even Ravan's dead body was treated with respect. He was given full Vedic funeral, the ceremonies. When he came back home, Ma Keke, who was responsible for him being banished, how did Lord Ram behave? All of us know that. He bent down and touched Ma Keke's feet. He had no anger, no angst. That to me is true inclusivity. Now, can all religious communities feel secure in a Ram Rajya, in a putative Ram Rajya? The BJP says it wants to usher in a Ram Rajya. Look, I won't get into politics of it, but if it's run according to the principles of Ram Rajya, yes, every single community is a part of it. I mean, and there's this lovely line that Lord Ram himself had said in the Ramcharitmanas, Purush Napunsak Nari va Jiva Charachar Koi Sarv Bhav Bhaja Kapata Taji Mohi Param Priya Soi. That any man, any woman, any transgender as well, any living being, any plant, any animal, you give up deceit, love each other, come to me, you're my people. You can't get a more inclusive statement, than that. Even in terms of practice today, you find so many, I'm doing a documentary on the Ram Janmabhoomi ji, and there are so many Muslims who are coming to Ayodhya and taking darshan out there. Among them is also Irfan Saab, who was one of the litigants. And he has said that he wants to take the darshan of Ram Lalla. And this to me shows inclusivity. Also, one of the things to learn from Lord Ram is that the nation will be united and strong when we are protected from external enemies. There's a lovely line that Lord Ram had said once again in the Ramayana, Bhai Bena Hoy Na Preet, that without fear, there is no true love. So our enemies should fear us, so that we are, they should know that we will not go looking for a fight. But if anyone attacks us or puts any Indian anywhere in the world in harm's way, they should know that India will come for the protection of their Indian. And we've shown that repeatedly. When Indians have got stuck in war zones, we've got Indians back. These are the principles of Ram Rajya. So you're saying that Ram's views and his principles have practical application even today. Okay, let me just go back to what you said. You said that every community has some sort of link to Lord Ram. Can you be more specific with examples of their links? Within the Ramayana itself, as one spoke of different communities across India, when he traveled, I gave the example of Nishadraj, I gave the example of Shabrima, I gave the example of how he treated the Mayuranga dynasty as well, that is Ravan's dynasty, even after the death of Ravan, how he treated the people of Lanka itself, who he didn't behave like an invader who was fighting his enemy. The people of Lanka, who had nothing to do with the battle, were treated with honor and respect. How he treated the Vanars, the respect he gave to the Vanar Sena, to Sugriv, to all of them. This is what actually shows inclusivity. Now, obviously, one cannot give examples which would be related to Islam or Christianity because those religions didn't exist at that point of time. But the principles are very clear. And once again, one is seeing the example of this in the modern day. In people like Irfan Saab and people like K.K. Mohammed Saab, who's an archaeologist, whose work helped prove the existence of, was one of the things which helped prove the existence of the temple in the court. And K.K. Mohammed Saab had said, in our documentary, I'm paraphrasing, he said so beautifully, that Babar was a foreigner. He was from Uzbekistan. Baki was a foreigner. I'm an Indian Muslim. What do I have to do with them? And this to me is the spirit of Indian togetherness, Indian unity within our diversity. Indian unity. Well, the BJP says that, look, they're not appropriating Lord Ram, but they're certainly appropriating the values that he espouses, and therefore, through that, they want to be the conduit of the establishment of Ram Rajya. But as you know, there is a whole ecosystem that says that Gandhiji, for example, his view of Ram Rajya is very different from the BJP's view of Ram Rajya. Is this a correct assessment on the ecosystem, the left liberal, so-called left liberal ecosystem's part?
I mean, I won't get into politics, but I would say that everyone's conception of Ram Rajya can be different. So, for a very simple example, I mean, again, I'm not getting into politics, but Mahatma Gandhi, BJP, Congress, all of them, I guess they would all agree on one of the principles that Mahatma Gandhi had taken up, that we must work against the caste system, that we must treat all as equal, which, as I said earlier, was actually Lord Ram's philosophy as well. In this, you'd find people across the political spectrum agree with Mahatma Gandhi, but in some cases maybe there's a difference, because, for example, Mahatma Gandhi was a proponent of non-violence. Would he have advocated a battle with, say, with our western neighbor, over national issues? Maybe not. And maybe that would be closer to the Jain version of the Ramayana. I'm sure you're aware there's a Jain version of the Ramayana in which Lord Ram is completely non-violent. But in the Valmiki Ramayana or the Ramcharitmanas, Lord Ram is extremely inclusive and kind with those who deserve it. But when he had to fight with enemies, he fought. He didn't go looking for fights, right? But if he had no choice, he tried everything possible to avoid a fight, like he did with Ravan as well. He sent an emissary in the form of Prince Angad, to try and make peace without war, but that was rejected. Then Lord Ram had no choice; he fought. So in this way, modern Indians do agree that perhaps with our Western neighbor or anyone else, if someone attacks us, we will fight back. In this way, perhaps maybe we are different from Mahatma Gandhi. Well, Amish Tripathi, thank you for speaking to me on the hard facts. Very balanced point of view, viewers, but very well researched. Provides answers to a lot of questions that are being asked, and I hope out of this conversation you got the answers. We'll take a very short break.
Ashwin Sanghi, of course, viewers, best-selling author. He needs no introductions. He's also a commentator, a columnist who has written extensively on issues that touch our everyday lives. Now, the reason we are speaking to you, Mr. Sanghi, tonight is to ask you on speaking to the minority community tonight and telling us what is the message from Ram Nagri to the Muslim minority community. So thank you, Mr. Sanghi, for speaking to me, and I want to begin by asking you, January 22 is being seen as Bharat's pivot to its civilizational past. Now, please put this into context for our viewers, specifically those who are today a little perturbed and might be constituting the minority. Well, Rahul, first of all, thanks for having me here. But, there are the Pran Pratishtha is ultimately, what is it? It's ultimately imbuing life into the deity. But in some ways, this Pran Pratishtha is also injecting fresh energy into Sanatan Dharma. So in that sense, this event cannot be considered just a religious moment, but a civilizational one. Some may see the rituals as triumphalism of sorts, but frankly, I see it as a celebration of survival. So many of the belief systems that sort of profess about one true God have had a historical advantage over pagan belief systems. Whether it was Zoroastrianism in Iran, or it was the Mithraic cults of Rome, or whether it was the Egyptian deities and the Greek gods, all of those were wiped out. So in that sense, the rise of Ram Janmabhoomi and the consecration of Ram Lalla symbolizes survival more than anything else. Survival more than anything else, because the legacy would have been extinguished. Now we can go into why and all of that, and I don't want to dredge up old wounds, but let me just quickly ask you, could this movement have succeeded without having acquired a political avatar or color? In some ways, Rahul, I don't know. Before I answer that question, I really wish that it hadn't taken on a political dimension, because this is something which I really would have loved in case this had, instead of being a political dispute leading to a judicial issue, I wish that this was something which had been arrived at in the manner of a negotiation between two communities. I mean, we all know that the estimate of Sitaram Goel is around 3,000 temples having been destroyed. And obviously you cannot right every wrong of history. But there are a few places, whether they are Somnath, Ayodhya, Kashi or Mathura, where there is very strong sentimental value attached. And to see the destruction that has happened in the past, you don't need to go to these places. You can simply go to the Quwwatul Islam Mosque next to the Qutub Minar, where there is a signboard saying that 27 Hindu and Jain temples were demolished in order to build the mosque. Now, as I said, you cannot attempt to right every wrong, but then neither can you expect that a wounded civilization can ignore all its open wounds. So it, in some ways, baffles me that why could India's Muslim leaders not rise above this and say, hey, listen, there are maybe 2 or 3 places where a negotiated settlement needs to happen because of the sentimental value that these places hold for the Hindus. It's almost as though the entire community meekly surrendered to a group of antiquated leaders, and that is what really pains me, that I wish that this had been in the nature of a settlement between the two communities that could have in some ways strengthened those bonds. Well, so you're essentially saying that politicization was necessary because of the entrenched obduracy on part of a minority community and its political patrons. Is that what you're saying? Absolutely. And, think about this, Rahul. I'm going to elaborate on this for a minute more. Look at the world around us.
countries that were once welcoming migration from Muslim lands are today shutting their doors. Look at the rise of the right-leaning parties in Europe. And look at the groundswell of support for Trump in America. All of these should be eye-openers. Bharat, in its own clumsy and very messy way, has welcomed and assimilated all faiths through the centuries. And Sanatan Dharma, with all its alleged faults, has been really instrumental in establishing a plural ethos. Now, this was the moment for the Muslims of India to lead the way in establishing a gentler and a more flexible and a more updated and a kinder version of Islam. Remember, it sounds odd to you maybe, but the truth is that it took 14 centuries for the reformation to happen in Christianity. That's true. And Martin today, Luther, Islam is exactly 14 centuries from its origin. So this is the starting point of that time when it should undergo that reformation. And who better to lead that reformation than the very enlightened Indian Muslim? Because some of the greatest movement of knowledge happened from ancient Bharat through the Arab traders, merchants, as well as the intellectuals from the Arab world. So this is a reformation which needs to happen, and I wish that this had been the starting point of that reformation. Well, so supremacism should be eschewed, and if reformation, however, Mr. Sanghi, doesn't happen, will the restoration of Ram Lalla to his Nagri heal wounds of, to paraphrase you, of Hindu civilization that you are referring to? Well, as I started out by saying that, India's political landscape is, it's loud and messy, Rahul. The truth of the matter is that this event has been simultaneously celebrated, opposed, revered, derided, and even feared. Even the four Shankaracharyas have spoken in conflicting voices. But then the truth is that debate and dissent are the very essence of Sanatan Dharma. We've never recognized any single church, pope, or holy book as denoting our supreme authority. And who denotes or who decides whether the Seva or Vaishnava or Shakta path is right? And how did the Buddha come to be absorbed as the 9th avatar of Vishnu? And which of the 300 versions of the Ramayana is right? And we have even the Rig Veda questioning whether God even knows the universe's origins. We have the Astika schools such as the Sankhya questioning the very existence of God. So the disagreements and the noise around the Ram Mandir may carry on, but all of this noise should be celebrated as symbols of the plurality and the very contradictions that make Sanatan Dharma. That is actually very well put, viewers. I think you just heard Smita Prakash talking about the fact that India is a noisy democracy and therefore you hear all these pluralities of opinions. But let me ask you, Mr. Sanghi, Ayodhya is behind us. So Muslim intent now will be tested again, at least in two other contexts, Mathura and Kashi. What should be the community's approach here now? No, I genuinely believe that, as I said earlier, I believe that if the leadership of the Muslim community had been far thinking, then they would have used the opportunity of Ram Janma Bhoomi to actually cement their ties with the majority by proactively working towards a resolution of these 2 or 3 disputed sites. Now, the problem is that by adopting a rigid posture on the Babri Masjid issue, they painted themselves into a corner. And as you rightly said, the disputes in Kashi and Mathura are no less contentious. They're before the Supreme Court. What was that? The Places of Worship Act of 1991, the idea was to freeze the religious character of various places using 1947 as a cutoff year. But when you become obstinate regarding key places, then it will open the floodgates to litigation regarding many more spots. So do really Indian Muslims need to fight over these 2 or 3 spots, or would they rather fight over 200 or 300 spots? What really is my fear is that now you may have the possibility of many, many more sites coming up for discussion. What could have been a very amicable
settlement between two communities, between the two major communities of Bharat. Instead, it may not go in that direction, and that is something which I'm not too happy about. Yeah, that is actually worrying, Mr. Sanghi. That's very worrying. Now, how do we sort of pull back from this brink? I mean, if you're saying that there's perhaps going to be a little bit more of a conflict, how do we resolve this, salvage this situation, for the lack of a better word, going forward? Well, I mean, let me put it this way. I genuinely believe, Rahul, that in some ways, Ram transcends religion. I mean, how else do you explain Ram being described in 300 versions of a Ramayana? And even forget, let's say, Valmiki's Ramayana or Tulsidas's Ramcharitmanas or Vyasa's Adhyatma Ramayana, all the Hindu versions. But what explains, for example, Badauni's Persian version, the Razmanama, or the Mapila Ramayana, which was the Muslim Ramayana? And why is, for example, Indonesia, which is a country with the world's largest Muslim population, still celebrating a piece of literature called the Ramayana Kakavina with mask dances? Why does Angkor Wat have the most popular Ramayana scenes depicted on its wall? Why is Thailand's monarch still known as Rama the 10th? And, I mean, how many of us know that the ancient capital of Siam, and by the way, that word Siam itself comes from the word Sham, which is the complexion of Ram. And why was the capital known as Ayodhya? And why do Malaysian Muslims perform the shadow puppet show, which is based on the Hikayat Seri Rama? So in that sense, Ram may not be part of their religious identity, but he continues to be part of their cultural identity. And this is something which India's Muslims will also need to be able to come around to. That there are certain places which have a very strong emotional connect with the majority community. It is better to settle those 2 or 3 places rather than allowing this to be carried on and allowing matters to escalate where, the blanket protection that is offered today by the Places of Worship Act, suddenly we find that has suddenly been removed, and we now have a elongated period of legal disputes. What imminent sense you actually make, Mr. Sanghi. Thank you. You've spoken very openly, and I think the viewers are getting a comprehensive sense. Mr. Sridhar, you need no introduction. You have been someone who has been talking about spiritual aspects for a while now. You write columns for various newspapers, and you have a point of view which is very, very well regarded. So how do you see the 3 temples in Tamil Nadu tie in with the Ramayana? Because what we are being told is that the Prime Minister is visiting those temples specifically that tie in with the Ramayana. So how do these 3 in Tamil Nadu tie in with the Ramayana? Okay. Namaskaram, Rahul. Pleasure talking to you and to all the Astikas and the viewers through your channel. These 3 temples hold immense significance. That said, every temple in Bharatadesham has significance, Rahul. That said, when we trace the steps of Prabhu Sri Ramachandra, right from Uttar Pradesh, which is Ayodhya, and then he was asked to go on an exile for 14 years. Then he went across Madhya Pradesh, Maharashtra, some parts of Chhattisgarh. Some Astikas believe even Andhra and Telangana. Of course, he touched Karnataka because of Kishkindha, and then reached Tamil Nadu, the state of Tamil Nadu, and then built the Setu between Bharatadesham and Sri Lanka. Okay. These 3 temples. First is Srirangam. So Srirangam is a beautiful temple town situated in an island formed in the fresh waters of Kaveri. So we have immense references even in the Itihasa Sreshtham Srimad Ramayanam of Valmiki, that the Kula Dhanam, the Kula Deivam in India, in Bharatadesham, we have this Kalachar, this culture, the Sampradayam of having a family deity. So the family deity to the kings of the Ikshvaku race of Ayodhya was referred to as Narayana or Jagannatha.
And this Narayana or Jagannatha, who was worshipped in Ayodhya as the Kula Devam of the Ikshvakus, was handed over by Prabhu Sri Ramachandra to his very favorite devotee, good friend Vibhishana. Vibhishana wanted to take this Divya Murti of Narayana or Jagannatha to Lanka. On his sojourn, he stopped by the banks of Kaveri, where another Chola king called as Dharma was performing austerities for the Lord to come. Then the Lord said, to satisfy Vibhishana, I shall look south. I won't come to Lanka. I will look south from here, but I will love to stay here. Since that place is like an auditorium, like an amphitheater, like a place for both the god and the goddess, it is called Rangam. And especially for Mahalakshmi, it is called Sri Rangam. Okay. And the Lord, who was earlier referred to as Narayana or Jagannatha, was later called as Ranganatha from then on. So Ranganatha Swami temple in Sri Rangam in Tamil Nadu by the banks of Kaveri is a beautiful temple, the world's largest, oldest functioning temple. And when Modi ji comes, it is a beautiful commemoration of the bond that we share between the state of Tamil Nadu and the state of Uttar Pradesh. One. Point number two, after he took the Vanara Sainyam from Kishkindha across Tamil Nadu to the end of Tamil Nadu, when I say end, one side, when you look at the map, at one part of it, he had to seek the blessings and the permission, rather than saying blessings, the permission of Varuna, that is the ocean king. And he performed austerities for 3 days. When I say austerities, he went on a fast, Prayopavesham, towards which finally the king of the waters gives him permission and he builds the Setu. So the place where he reclined on a mat of Darbha grass is called Darbha Shayana Rama, and the kshetram is called Tirupullani. A few kilometers from it, when you cross the oceanic waters, is another island where you find the temple of Ramanatha Swami temple. Though there is no exact mention in the Ramayana, of course, certain Puranas like the Kurma Purana attribute that Rama worshipped Shiva in this kshetram. And since Rama worshipped Shiva, it is called Ramanatha Swami, and the kshetram is called Rameshwaram. Mm-hmm. Interestingly, in the Ramayana, when Rama narrates to Sita, he says, Atra Purvam Mahadevaha, I propitiated Mahadeva. Some take the Mahadeva Shabdam to be Lord Shiva, and some say it could be the oceanic king. That said, Rameshwaram is a very important Jyotirlinga Sthalam for many of the Shiva devotees, the Shaivites. And it also holds the record of having the longest corridor in this world. And our honorable ex-president, Abdul Kalam ji, belonged to this place. It's a beautiful island. And this temple has contributions made by the Setupati kings. Something very interesting about the Setupati kings. They were the kings who were responsible for protecting the Setu constructed under the directions of Rama between Bharatadesham and Lanka. So they were the Setupati kings. The third is the end of Rameshwaram, which is called Dhanush Koti. Around the 1960s, mid-1960s, there was a huge hurricane cyclone that devastated the town so that many people died, many people had to migrate. Today, you cannot call it a bustling town, yet there is a temple which the locals believe to have existed over 100 years. And that is the Kodanda Swami temple. And that kind of marks the end of Bharatadesham, from which you will have Lanka from then on. So I'm sure Modi ji must have had a great council and advisory team that tells him all these details. And he, of course, as usual, religiously, sincerely adheres to these practices, and coming down all the way south to say that Rama is not for one state, not for one region, not for one country. He's universal. He's Sabke Ram. He's Sabke Ram, that's right. Now look, there is also a wider connect, of course, beyond Tamil Nadu with Lord Ram, isn't there? Yeah, there is. For example, in the state of Karnataka, where many tourists visit as the ruins of Vijayanagara, the Hampi, that place was earlier referred to in the Ramayana times as Kishkindha. And we had those two famous brothers of the Vanara clan called Vali and Sugriva belonging to that region. So Karnataka has a connect with the Ramayana. And we also have many beautiful temples for Rama in the state of Karnataka.
one that comes to my immediate memory is Hire Magaluru. We have heard of Chikka Magaluru. Chikka Magaluru means the town given to the little girl. Hire Magaluru means the town given to the older girl. So that Hire Magaluru, there's a beautiful temple of Prabhu Sri Ramachandra. And if you come to the state of Tamil Nadu itself, Rahul, there is a temple in a place called Madhurantakam, where he's called Yeri Kattaraman, the one who protected Sampradayam, and he was visible even to the British viceroys. Then we have a temple in Tillai Vadaham, where he's extremely pretty. Vaduvur is a place which is a must visit. I'm telling all the Bharatiyas, please have a glimpse of Rama and Vaduvur. There is a place close to Tanjavur called Punnainallur. There is a place called Pullambudangudi, and there is Velliyangudi, where he's Kolavil Raman and Balvil Raman. There is a place called Nedunkundram, where he's doing yoga. So Rama is found everywhere in Tamil Nadu except for the hearts of a few politicians. He's there in the hearts of all Astikas in the state of Tamil Nadu. Coming to the state of Andhra Pradesh, there is a kshetram called Vontimetta. And this is the place where Potanna, a great Telugu poet, composed the Bhagavatam in the Telugu language. It's a beautiful place, a fulcrum of Vijayanagara architecture. We have the very famous, world famous temple called Bhadrachalam by the banks of Godavari in the state of Telangana, which was constructed, the Murti was handed over earlier, but it was constructed by a great Telugu poet and a devotee in the 15th century called Kancharala Goppanna or Bhadrachala Ramadas. Of course, the Honorable Prime Minister visited the Kshetram of Tirupprayar in Kerala, where it is a Ramaswamy temple. In be it Maharashtra, where we have a large section of the Aranya Kandam which took place, because Shurpanakha, Garbhabhangam, Karadushana Vadam, which happened in the Janasthana region, which is the Nagpur region. Then we have Chhattisgarh, that carries the Dandakaranyam forest. So Rama spent 13 years in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Today there are two states, but in that region he spent 13 years, where he met the sages like Sutikshna, Sharabhanga, Agastya and Valmiki. And Uttar Pradesh is, of course, the place where Ayodhya is, where he met his closest friend Guha in Shringiverapuram. Then he met Bharadwaja at the Prayaga Kshetram. Then he went on an internship for 6 days with Vishwamitra, where he could execute the orders that were given to him. And Nepal has a great connection with Mithila Desham, where Sita originally belonged to. So he connects countries. Rama and Ramayana connect countries and regions. Well, thank you very much. Very nice speaking with you as always. A fount of knowledge, Vedic scholar, viewers, Dushyant, Sridhar. Thank you very much for taking out that time. चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, उदर भूख सबकी बुझाता। राही का तरवर, प्यासे का सरवर, सकल प्राणियों का जो दाता। कष्टों का करता है जो भंजन, महादेव करते हैं जिनको नमन। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान। वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। न्यूज 18 के भी राम है। आपने भी बहुत सुंदर भजन बनवाया है, मैं सुना मैं इसको।
देखिए हमने तो बस इतना कहा है कि पल पल में, युग युग में, कण कण में राम, हर क्षण में, हर तन में, हर मन में राम, प्रणाम सिया राम, प्रणाम सिया राम। ये जो आपने प्रणाम कहा ना, ये प्रणाम कहा था जनकपुर ने, जब ससुरारी में आए राम, हम उसी धरती के एक वासी, मेरे तो पहुना है श्री राम। हम हंसते हंसते पहुना को कुछ हंसी सुना भी देते हैं, हमसे बखान के करी भैया, हम राम जी को कभी कभी गरिया भी देते हैं। हम तो जनकपुर वाले हैं ना भैया। प्रणाम प्रणाम राम, ये सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मिथिलांचल में राम जी को कैसे उनका स्वागत, उनको मंगल न कौनो भयो राम के बियाह नियर, सुनली नहीं कान से न नैना निहारी हैं, हमसे बखान के करी हो राम रघुवर के, हम तो राम पहुना के रोज देत गारी हैं। हम तो बसिंदा हैं जी राम के ससुरारी के, सिया जी हमार बहिना, राम पहुना हमारे हैं जी सरकार। हम तो पहुना भाव में रहते हैं। पर अब थोड़ा सा एक सियासी रंग इसमें क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो आस्था का तो विषय राम है, पर राम राज की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें विकास, हर किसी को, किसी के घर में अंधकार ना हो, किसी को भी रोटी की दरकार ना हो, इस तरीके का राम राज्य की परिकल्पना हम कहते हैं, मानते हैं। तो क्या वो हो रहा है? पिछले 9 साल में ऐसा दिख रहा है? नहीं, थोड़ी सी नजर घुमा लीजिए। आज आपके कार्यक्रम का नाम है अयोध्या पर्व राम युग। राम जी की ज्योति स्थापित होने जा रही है। 11 दिन का एक अद्भुत यम नियम के साथ प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं। जमीन पे सो रहे हैं, अपने खाने से पहले गौ माता को खिला रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यम नियम का कठिन पालन कर रहे हैं। और याद रखिए, मैं तो न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहूंगा, ये जो राम ज्योति है ना, केवल घी और दिया से नहीं जली है। ये राम ज्योति इस देश के 52 करोड़ लोगों को पहली बार बैंकों से जोड़ करके जली है। ये राम ज्योति मेरे भैया 4.25 करोड़ बेघर को उनको छत दे करके तो जली है। ये राम ज्योति 13 करोड़ लोगों के घर में आप सबको नमस्ते, जय हिंद और जय श्री। मनोज जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पहला प्रश्न यही है जो आज के हमारे शीर्ष से भी जुड़ा है, आपके गीत से भी जुड़ा है, राम थे राम है राम रहेंगे, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम कौन है और हमारे रोम रोम में, कण कण में राम क्यों है भारत के? ये बड़ी अच्छी चर्चा है और ये पूरा इस समय विश्व सर्च भी कर रहा है, राम क्या क्या हैं। जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा संसार शामिल है, हमें तो लगता है पूरी सृष्टि शामिल है, तो उनके लिए हम एक कविता की 4 लाइनें हैं कि सूरज को देता है भीषण अगन, तारों को करता है जो रोशन, सूरज को देता है भीषण अगन, तारों को करता है जो रोशन, चंद्रमा को चांदनी और धरती को देता है प्राण, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम, मेरा राम तेरा राम।
हम तो राम की परिभाषा ये समझते हैं मेरे भैया। और देखिए ये जो समय है ना, ये स्वयं भी बता रहा है कि राम जी कौन है। वो समय भी याद करना जरूरी है जब भगवान राम प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। और तब तुलसी बाबा ने लिखा है, उन्होंने एक चौपाई लिखी है जिसको थोड़ा सा मुझे विस्मृत होने लगा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा प्रगट्यऊ राम लोक विश्राम। क्या बात। तो वो जो जिनके उपस्थित होने के पहले दुनिया के भाव बदलने लगे थे, हम क्या मनोज तिवारी भी समझ रहा है, और यहां सामने बैठे हुए लोगों के साथ जो न्यूज़ 18 देख रहे हैं इस समय, वो भी समझ रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि दुनिया शांति के लिए भारत की तरफ देख रही है, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत की तरफ आशा लगी है। ये ऐसे ही नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने का बेड़ा भारत ने उठा लिया है। ये ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पे उस जगह जहां कोई नहीं गया वहां भारत पहुंच गया। ये राम के पुनः आने की एक बहुत बड़ी निशानियां हैं। और मुझे लगता है कि अब सब जो लोग कहते थे राम काल्पनिक हैं, वो भी कह रहे हैं हम 22 के बाद जाएंगे। इसका मतलब तुम भी मान लिए कि राम थे, राम है और राम रहेंगे। पर आपने ये मनोज जी आज अच्छे फॉर्म में आए हैं बैटिंग करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि भाई पहला शॉट ऐसा लग गया ऑन ड्राइव सचिन की जैसा। आपने ऐसी बॉल दे दी, आपने ऐसी बॉल दे दी कि मन किया कि उसमें खेलें। नहीं लेकिन याद देखो जी, चींटी को कण भर हाथी को मन भर उदर भूख सबकी बुझाता राही का तरुवर प्यासे का सरवर सकल प्राणियों का जो दाता कष्टों का करता है जो भंजन महादेव करते हैं जिनको नमन। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान। वो है राम 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 मेरा राम राम राम। न्यूज़ 18 के भी राम है। आपने भी बहुत सुंदर भजन बनवाया है। मैं सुना मैं उसको। देखिए हमने तो बस इतना कहा है कि पल पल में युग युग में कण कण में राम, हर क्षण में हर तन में हर मन में राम। प्रणाम सिया राम, प्रणाम सिया राम। ये जो आपने प्रणाम कहा ना, ये प्रणाम कहा था जनकपुर ने जब ससुरारी में आए राम। हम उसी धरती के एक वासी, मेरे तो पहुना है श्री राम। क्या बात है। तो जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप पर यह आरोप लगता था कि आप कह रहे हैं कि मंदिर तब बनाएंगे जब आप कुर्सी पर बिठाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 24 के लिए कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमें वोट बनाकर फिर से सरकार बनवा दो। वो प्राण सियासत भी ला रहे हैं इस आस्था। वो प्राण प्रतिष्ठा में कभी नहीं आते। वो तो राम का प्राण हरने में विश्वास करते हैं, राम को प्राण देने में विश्वास ही नहीं करते हैं। अभी जो लोग भी आपके मंच पे आएंगे, जो इंडी अलायंस से होंगे, आपको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या दिक्कत है? 500 साल से राम जी के मंदिर को तोड़कर, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी। अगर आज का कानून उस समय होता ना,
तो बाबर को फांसी की सजा होती। आप किसी दूसरे, आज भी मैं इस शो में कह रहा हूं, मैं एक सांसद के रूप में भी कह रहा हूं, किसका मजाल है जो किसी भी धर्म के किसी देवालय को गिरा दे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, क्या कोई तोड़ सकता है? हमारा कानून ऐसा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने में राम का सम्मान क्यों छूट जाएगा? हम तो कभी नहीं, हमारा तो धर्म ही ऐसा है। आप कभी ये सोचते नहीं हैं कि 47 में धर्म के नाम का बटा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिसे आज हम भारत कहते हैं, उस हिंदुस्तान में हिंदू को अपनी आस्था को और राम लला को अपने विराजमान होने की जन्मभूमि को कोर्ट में साबित करना पड़ रहा है। अब वही बात ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर है कि कोई बात नहीं, देवता को अपनी अपनी जगह पर जहां वो हजारों साल से विराजमान है उसको लीगली कोर्ट में प्रमाणित करना पड़ रहा है, वो भी हिंदुस्तान। अब आपने तो लिखा है ना, राम युग की शुरुआत हो रही है। राम युग शुरू हो रहा है, इसका मतलब त्रेता युग की शुरुआत हो रही है। वैसे भी लिखा है शास्त्रों में कि कलयुग के बाद त्रेता युग की शुरुआत होगी, और मेरा तो दिल कह रहा है कि 22 तारीख से त्रेता युग की छाया शुरू हो रही है। राम जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी जब प्रधानमंत्री आवास में गाय माता खा रही है खाना, और खिला कौन रहा है? देश का प्रधानमंत्री। तो वो अकेले नहीं है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देश की 140 करोड़ जनता कर रही है। उस 140 करोड़ में राहुल जी को हटा दीजिए। उस 140 करोड़ में आप उन कुछ लोगों को हटा दीजिए जो कहते हैं सनातन नष्ट करने आए हैं। अरे भैया, अपना धर्म बचा लो। दूसरों को नष्ट करते करते तो बहुत लोग चले गए। किसने, बाबर ने कभी सोचा होगा कि ये दिन भी आएगा? हमारा एक साथी आया है यहाँ पे, मेरे साथ है जी। अमित धुल, हरियाणा का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार। बुला लो उसको। हाँ बुला लीजिए। एक तो कुर्सी लगाइए ना यहाँ पे, कुर्सी लगवा दीजिए भैया, एक तो कुर्सी लाओ। अमित इधर आओ बेटा, स्वागत कीजिए अमित धुल जी का। ये अमित के लिए आप लोग, राम है राम रहेंगे, इन्हीं के साथ हमने गाया है, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। अरे तो बाजा भी है, जरा 5वां सुर लगाइएगा, सा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। ये तो कोई भी गा सकता है। हम राम के पहले कहते थे खुद से, अब पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। सभी गाइए ना। राम के थे, राम के हैं, हम राम के, आइए। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, सभी बोलिए, सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सनातन है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है हम लोगों के गाने में, अच्छा लग रहा है। जरा एक बार बाजा बंद करना भैया। हाँ, थोड़ा इशारे से।
आप लोग क्या गाए हैं? मैंने ऐसा आज तक टीवी का शो नहीं देखा कि राम के थे, राम के हैं, हम राम के, और जोर से बोलिए, राम के हैं। और एक लाइन है, सनातन है धर्म हमारा, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे क्या बात हैं। है? सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा सनातनी है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में बहेंगे। बहुत अच्छी लाइन, कुछ लाइनों को जीना है। आप तो खुद शब्दों के बहुत धनी हो, और न्यूज 18 के जो एंकर्स को मैं सुनता हूं, मैं अमीश देवगन जी को भी सुनता हूं, सब लोगों को सुनता हूं। आपका एक जो है ना, वो एक लाइन तो हम सबको इस पे चलना है मेरे भाई बहन, कि राम की गंगा में हम सब बहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर राम की गंगा में बहना है तो समझ लीजिए मर्यादा की गंगा में बहना है। क्या बात है? राम की गंगा में बहना है तो सत्य की गंगा में बहना है। राम की गंगा में बहना मतलब प्रातः काल उठी के रघुनाथा, क्या बात, मातु पिता गुरु नाम महिमा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, आपको अपने माता और गुरु के पैर छूने की जो बात करते हैं वो राम कैसे आपसे अलग हो सकते हैं? जेही पर जेही कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिला ही न कछ। वाह वाह वाह। राम जी कहे हैं कि जिस पे आपका सच्चा प्रेम है, वो दोस्त हो, वो जीवन साथी हो, वो आपको मिल के ही रहता है। तो राम की गंगा में हम सब बहेंगे। फिर तो सब कह सकते हैं कि राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहिए। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बाबा बहुत अच्छे, बहुत सुंदर म्यूजिशियन बुला रखे हैं आप। हम लोग का और जो जोश आ गया, जोश और बढ़ गया। और आपको सुनाना होगा, ऐसे नहीं जाने देंगे इनको। नहीं। आपके आने से हमारा जोश बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो इनके लिए एक बार जोर से बोलिए, जय श्री। नहीं, हमने हाँ, क्या बात है। देखिए एक बात आपसे बताऊं, तो खड़े हो गए तो खड़े ही रहते हैं। हाँ जी, ये ऊर्जा ऐसे निकल के आ रही है ना। खड़े हो गए तो खड़े रहते हैं। वैसे भी अभी रामलला भी खड़े ही हैं 5 वर्षीय। और क्या सूरत है। देखिए अभी गाना तो हम लोग पहले गा दिए थे। हाँ। लेकिन गाने की एक लाइन ऐसा मिला है, हमने तो मूर्ति नहीं देखी थी। वो क्या लाइन है? भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवाधारी, जितनी मूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। क्या बात है। अब एक बार और सुना दीजिए। ये गाना, ये शब्द हम लोग पहले गा चुके हैं, और मूर्तियां जब देखली हैं तो हमके लागल कि बाप रे, तो रामे जी लिखवा दिले बड़े। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवाधारी,
जितनी मूरत जग में देखी। ये जो भैया गमछा ओढ़े हैं, जो टीका लगाए हैं, कुछ लोग इस टीके से भड़क जाते, कुछ लोग इस गमछे से सरक जाते। शायद सरक जाते शब्द ठीक नहीं है, कुछ लोग इस गमछे से सनक जाते। लेकिन याद रहे कि जो सूर्य का रंग है, जो अग्नि का रंग है, उससे कहां तक बच के जाओगे। बनाना होगा जब भोजन इसी भगवे को जलाओगे। वहां कैसे बचोगे? आंच कैसे आएगी? सूर्य की आंच, सूर्य की आंच या अग्नि की आंच। तो भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवाधारी। जितनी मूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे, राम के थे जोर से राम के, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे दादी से, पहले कहते थे दादी से, पहले कहते थे दादी से, पहले कहते थे दादी से। दादी से कहते थे ना, दादी कहती थी बाबू तनी रामायण सुना दो, तो हम दादी को रामायण सुनाते थे। अपने नहीं भी सुनना होता तो पढ़ते जाते थे। मंगल भवन मंगलहारी, नवमी तिथि शुभ मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रिय बीता। सुनते सुनते थे, पढ़ते थे। मध्यकाल अति शीतल घामा, पावन काल पावन जन्म लोक विश्व। दादी को सुनाते थे, अब दादी को भी सुनाएंगे। क्या बात है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मैं सोचता हूं कि इसमें कौन धर्म आड़े आता है? जो कहना है वही करना है। इसमें कोई धर्म आड़े आता है क्या? अब ये कोई अखिलेश जी को समझाए। अखिलेश भाई आए तो मेरी भेंट नहीं, मैं आज उनसे मिल लेता, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। हम पार्टी के नेता के आधार पे नमस्कार बंदगी बंद नहीं करते। जो लोग आज भटके हुए हैं, कल राम जी उनको रास्ते पे ला देंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रविसी नगरी की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया राम। शौचालय बना करके, इज्जत घर दे करके जली है ये राम ज्योति। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया सालाना इलाज देकर के बनी जली है। इस ज्योति का कितना लौ होगा, जो ज्योति न जाने कितने
लगभग 12 करोड़ माताओं की आंखों से धुआं हटा करके जली है, उस ज्योति पर विपक्ष को गर्व हो न हो, हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा साहेब, हमें रहेगा साहब। क्या बात है। तो जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप पर यह आरोप लगता था कि आप कह रहे हैं कि मंदिर तब बनाएंगे जब आप कुर्सी पर बिठाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 24 के लिए कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमें वोट बनाकर फिर से सरकार बनवा दो। वो प्राण सियासत भी ला रहे हैं इस आस्था वो प्राण प्रतिष्ठा में कभी नहीं आते। वो तो राम का प्राण हरने में विश्वास करते हैं, राम को प्राण देने में विश्वास ही नहीं करते हैं। अभी जो लोग भी आपके मंच पे आएंगे, जो इंडी अलायंस से होंगे, आपको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या दिक्कत है? 500 साल से राम जी के मंदिर को तोड़कर, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी। अगर आज का कानून उस समय होता ना, तो बाबर को फांसी की सजा होती। आप किसी दूसरे, आज भी मैं इस शो में कह रहा हूं, मैं एक सांसद के रूप में भी कह रहा हूं, किसका मजाल है जो किसी भी धर्म के किसी देवालय को गिरा दे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, क्या कोई तोड़ सकता है? हमारा कानून ऐसा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने में राम का सम्मान क्यों छूट जाएगा? चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, उदर भूख सबकी बुझाता, राही का तरवर, प्यासे का सरवर, सकल प्राणियों का जो दाता, कष्टों का करता है जो भंजन, महादेव करते हैं जिनको नमन, दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान, वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। न्यूज 18 के भी राम है। आपने भी बहुत सुंदर भजन बनवाया है, मैं सुना मैं उसको। देखिए, हमने तो बस इतना कहा है कि पल पल में, युग युग में, कण कण में राम, हर क्षण में, हर तन में, हर मन में राम, प्रणाम सिया राम, प्रणाम सिया राम। ये जो आपने प्रणाम कहा ना, ये प्रणाम कहा था जनकपुर ने, जब ससुरारी में आए राम, हम उसी धरती के एक वासी, मेरे तो पहुना है श्री राम। हम हंसते हंसते पहुना को कुछ हंसी सुना भी देते हैं, हमसे बखान के करी भैया, हम राम जी को कभी कभी गरिया भी देते हैं। हम तो जनकपुर वाले हैं ना भैया। प्रणाम प्रणाम राम, ये सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मिथिलांचल में राम जी को कैसे उनका स्वागत, उनको मंगल न तोनो भयो राम के बियाह नियर, सुनली नहीं कान से न नैना निहारी हैं, हमसे बखान के करी हो राम रघुवर के, हम तो राम पहुना के रोज देत गारी हैं, हम तो बसिंदा हैं जी राम के ससुरारी के, सिया जी हमार बहिना, राम पहुना हमारे हैं जी सरकार, हम तो पहुना भाव में रहते हैं। पर अब थोड़ा सा एक सियासी रंग इसमें मैं, क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो आस्था का तो विषय राम है, पर राम राज की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें विकास, हर किसी को, किसी के घर में अंधकार ना हो, किसी को भी रोटी की दरकार ना हो, इस तरीके का राम राज। मंच पर जो मेरे साथ हैं, ये उनका त्याग है, बलिदान है, उनके परिजनों का, परिवारजनों का, उनकी राम भक्ति है, जिसको कि कई लोग मानते हैं कि उनकी सेवा की वजह से आज
ये सफलता, ये सिद्धि प्राप्त हुई है। चलिए उनसे भी जरा बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी मनोव्यथा क्या रही, आज उन्हें कैसा लग रहा है जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, पुनः विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि हो रहा है हल्ला, बैठ रहे हैं रामलला वहीं श्री अयोध्या धाम में। मोहनलाल खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, मेरे बगल में यहाँ बैठे हैं, तेजनगर कमला नगर आगरा से हैं, और उनके उस तरफ वहाँ पंकज अग्रवाल जी हैं, आपको भी नमस्ते। जसवंत छत्री बालकेश्वर आगरा से हैं, आप शिवशंकर अग्रवाल जी हैं, शिवपुरी बालकेश्वर आगरा से, और मेरे बगल में बैठी हैं पूर्णिमा कोठारी जी, जिनके दो भाई राम जी और शरद जी, दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्योंकि जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तब इन दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। पूर्णिमा जी, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने साल की थी और उस वक्त 30 अक्टूबर 1990 की बात है, अक्टूबर 1990 की बात है, तो उस वक्त कैसा माहौल था? जय श्री राम। मैं उस समय सिर्फ 19 साल की थी, दोनों भाई मुझसे बड़े थे, और माहौल तो ऐसा था कि तब से आज तक मैं बोलूंगी कि जय श्री राम का ये जो महामंत्र है ये मेरे मुंह पर तब से आज तक लगा हुआ है। भाइयों को मैंने रामशिला से लेकर राम ज्योति पूजन तक कार्य करते हुए देखा, और जब आह्वान का वक्त आया उन दोनों को अपना नाम आगे करते हुए भी देखा, दोनों को सबसे आज्ञा लेकर जाते हुए भी देखा, और दोनों को अपना सर्वस्व बलिदान करते हुए भी देखा। जब आपको ये खबर मिली, वहां जो घटना घटी है, कैसे आपको सूचित किया गया? उस वक्त तो जिस तरह से आजकल एक ही इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ हो जाता है वैसा तो नहीं था, तो कैसे आपको पता लगा और क्या आपको लगा उस वक्त? बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि मीडिया और नेशनल चैनल यही थे और उन सबको सरकार ने दबा दिया था। जब 30 अक्टूबर की कार सेवा जो सफलतम तरीके से हुई थी और मेरे दोनों भाइयों ने ये, जिसको मैं कहूँ कि सबसे पहले ध्वज फहराने का एक गौरव प्राप्त किया था, उन दोनों भाइयों ने अपना कार्य संपूर्ण किया। बहुत प्रसन्न थे, सभी कार सेवक प्रसन्न थे। वैसे में जब झूठ सबके सामने आया तो सब में स्वाभाविक रोष था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था वो 30 अक्टूबर की कार सेवा करके। उस संदेश को राष्ट्र के सामने नहीं आने दिया जा रहा था और झूठ दिखाया जा रहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और सच में परिंदे ने पर नहीं मारा। किंतु इस झूठ को संगठन और कार सेवकों के रोष में आगे बढ़ाया गया। संगठन ने निर्णय लिया कि 2 नवंबर को हम फिर से सांकेतिक कार सेवा करेंगे, और उस सांकेतिक कार सेवा में उन्हें न हाथ में झंडी डंडी कुछ भी नहीं था, उन्हें सिर्फ राम धुन करते हुए आगे बढ़ना था, कोई विरोध भी नहीं करना था। शांत भाव से जहां उन्हें रोका जाए वहीं बैठ जाना था, और ऐसा ही सभी कार सेवकों ने किया भी। सब शांत भाव से बैठ गए। ऐसे में उन शांत बैठे हुए निर्दोष कार सेवकों पर सबसे पहले अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, फिर लाठियां चलाई गई, और इससे भी मन नहीं भरा तो गोलियां चला दी गई। सभी ने अपने आसपास के घरों में आश्रय लिया, तब भी मन नहीं भरा। पता नहीं 30 तारीख की कौन सी खुन्नस थी उनके मन में कि उनकी विफलता की कहानी जो थी वो कार सेवकों के खून से वो पूरा करना चाह रहे थे, उसे धोना चाह रहे थे। मेरे दोनों भाई भी एक घर में शरण ले चुके थे, पर उन दोनों को उस घर से निकाल के निर्मम तरीके से, और मैं कहूँ तो कानून की खिलाफत करके, उन्हें उस दिन वहां पर गोली मारी गई। उन दोनों का बलिदान हुआ। बलिदान होने के तुरंत बाद ही कलकत्ता ये खबर पहुंचा दी गई थी संगठन के माध्यम से, पर संगठन ये साहस नहीं कर पा रहा था कि इनके घर वालों को कैसे बताया जाए, इनके माता पिता को कैसे बताया जाए। किसी तरीके से पिताजी को खोज के
संगठन के जितने बड़े अधिकारी थे उन्होंने बताया। मुझे नहीं पता पिताजी ने कैसे उस घटना को, उस बात को झेला। अब प्रश्न उठा कि घर पर माँ है, माँ के सामने ये बात कैसे जाए, माँ को कौन बताएगा ये बात। किसी का साहस नहीं हो रहा था। रात के लगभग 8 बजे कुछ लोग आए, उन्होंने शायद टो लेने आए थे कि इन्हें क्या पता है नहीं पता है, पर चूंकि टीवी सारे दिन से झूठ दिखा रहा था तो हमने टीवी भी बंद करके रख दिया था कि कुछ तो दिखाएगा नहीं, क्या फायदा है इसमें देखने का। और उस समय और कोई साधन भी नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने जब जाना कि हमें कुछ भी नहीं पता है, और माँ बहुत घबरा भी रही थी, अंदर से पता नहीं मन बहुत बेचैन था उनका सुबह से ही, तो उन्होंने देखा तो उनका साहस नहीं हुआ कि माँ को बताए। वो बिना बताए निकल गए। उसके बाद पिताजी आए। पिताजी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, रोया हुआ। माँ ने देखते ही फिर पूछा कि क्या बात है, आपका चेहरा इतना रोया हुआ सा क्यों लग रहा है। तो पिताजी ने बोला कि नहीं ऐसे मैं बहुत थक गया हूँ। चूंकि एक बात है कि मेरा विवाह भी सामने ही था 13 दिसंबर को, तो एक लगता है ना कि एक बाप के मन में बच्चे को लेकर बहुत जी भावना रहती है, तो कहीं शायद उसकी वजह से भी इनके मन में थोड़ी सी तकलीफ हो। उनके चेहरे की तकलीफ जो थी वो शायद वो अपने अंदर जो जज्ब कर रहे थे उसको वो कैसे कर रहे थे ये मुझे नहीं पता है, पर उन्होंने माँ के सामने फिर कुछ नहीं बोला, वो भी बैठ गए। इसके कुछ देर बाद जब थोड़ा समय और बीता तो काफी लोग धड़धड़ाते हुए घर में घुस गए। उन सब के आने से मैं तो, चूंकि मुझे वैसे माहौल की कभी आदत नहीं थी, तो मैं तो कुछ समझ नहीं पाई कि अचानक से इतने लोग घर पर क्यों घुस गए। पर माँ जो सुबह से ही बेचैन थी, उनके मन की जो आवाज थी ना, वो बोल रही थी कि कुछ अनहोनी है। वो उन सबको देखते ही एकदम से घबरा गई। बोली, तुम लोग इतने जन यहाँ पर किस लिए, क्या बात है, बताओ मुझे सच क्या बात है। ऐसे में मेरे मामा जी सामने आए और उन्होंने माँ को थोड़ा सा बैठाया और कहा कि दीदी हम सुन रहे हैं कि अयोध्या में गोलियां चली हैं और अपने किसी बच्चे को भी गोली लगी है। ये सुनने के बाद माँ अपने होश में नहीं रही। माँ वहीं अपने होश खो दी और मैं पूरी रात पागल के जैसे घूम रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पूरे घर में लोग बिखरे पड़े थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे भाई दोनों घायल हुए हैं, कोई मेरा भाई घायल हुआ है और मुझे मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसकी सेवा करनी है, उसकी देखभाल करनी है। पिताजी को खोजा, मैंने बोला पिताजी मुझे अयोध्या जाना है, भैया के पास जाना है। उन्होंने बोला हाँ बेटा चलेंगे। किसी तरीके से रात बीती, सुबह हुई, हम सबको बोला गया कि जल्दी जल्दी नहा धो लो सब, भाई तैयार हो जाओ अपना। हम सब नहा धो के तैयार हुए। फिर माँ के सामने मेरे एक मौसा जी आए, उन्होंने बोला, वो जमीन पर माँ के सामने बैठ गए तो माँ ने बोला कि क्या हुआ है, मुझे कुछ बताइए, किसको क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि दीदी आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। माँ ने बोला क्या हुआ, किसको। उन्होंने बोला आपके दोनों बच्चे नहीं रहे, राम शरद दोनों नहीं रहे। ये सुनने के बाद घर में माँ तो तुरंत ही बेहोश हो गई थी और घर में इतना हाहाकार मच गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे में मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने माँ पिताजी को देखूं, कैसे मैं खुद को संभालूं। मैं भी उस समय एक तरीके से बच्ची ही थी। बहुत तकलीफ वाले वो दिन थे। अभी भी याद करके आप भावुक हो रही हैं। ये 33 साल का दर्द है, जाता नहीं। अभी उसे महसूस करती हैं आप। उस वक्त कोई था आपके साथ, आपको सहारा देने के लिए? 13 दिसंबर को आपकी शादी है, घर पे शादी तो मैंने कैंसिल करवा दी थी।
और सहारा तो सभी लोग बने। आपको मैं कहूँ तो बड़े लोगों की बात कहूँ तो अशोक सिंघल जी, उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, साध्वी ऋतमरा जी और सारे बड़े लोग थे जो हमारे साथ उस समय थे। उसके अलावा मैं ये कहूँ कि जो वहाँ के लोकल संघ के अधिकारी समझिए, चाहे भैया और के साथ के खेले हुए संघ के स्वयंसेवक समझिए, उन सब ने पूरा संभाला हमें। आज बहने दीजिए, आज इन्हें रोकिए मत, आज इसको बहने दीजिए। आज इतने सालों बाद 22 जनवरी की जब तिथि आ रही है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, तब आपको कुछ लगता है कि जो अक्टूबर 1990 में आपके भाई करने निकले थे, कहीं उसका साक्षात्कार हो रहा है? बिल्कुल। आज आपके सामने दुख के आंसू तो है ही, किंतु मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ और शायद कहीं ये दुख और सुख के मिले हुए ही आंसू है, क्योंकि 33 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज भाइयों का बलिदान सार्थक हो रहा है और उन्हें देश भर से नहीं, मैं तो कहूंगी कि पूरे विदेशों से भी उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, मैं सच कहूं तो कहीं ना कहीं अंतर्मन से मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने राम काज के लिए इन्हें चुना और इन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। बलिदान तो लाखों हुए, किंतु आज राम शरद का जो मान है, जो सम्मान है, वो देख के मन बहुत, जिसको बोलूं, गौरवान्वित महसूस करता है। मैं उनकी बहन हूं, मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। इससे पहले कि मैं मोहन जी, पंकज जी और शिवशंकर जी से बात करूं, एक प्रश्न आपसे पूछना था कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो जो गोली चलाई उसको सही ठहराते हैं, कहते हैं संविधान की रक्षा करने के लिए हमें वो गोली चलानी थी। आप एक बात कहिए तो कानून की शिक्षा उन्होंने पाई है कि नहीं पाई है? अगर वो संविधान की बात करते हैं तो पहले कानून भी देखना चाहिए। निरीह निर्दोष जो कार सेवक राम धुन कर रहे थे, उनके सीने पर उन्होंने उनके सर पर गोली मारना, ये कौन सा कानूनन सही है? ये संविधान की बात करते हैं। संविधान अगर वो मानते भी हैं तो फिर कार सेवकों पर, और वो भी राम धुन करते हुए लोगों पर गोली चलाने की बात कहां से आती है? आप माइक लेकर बोलिए। ये तो सीधी सीधी हत्या करना है। सामने खड़े हुए असहाय बच्चों को ऊपर गोली चला देना, ये कोई संविधान की रक्षा नहीं है। ये उन राम भक्तों की हत्या है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। जो कुछ बच्चे हैं जो बलिदान हुए, उन्हीं के बलिदान का आज परिणाम है जो हम भगवान राम का भव्य मंदिर के आज दर्शन करेंगे, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बाकी जो बलिदान जिन लोगों ने दिया है, वास्तव में उसी का परिणाम हम सबके सामने आ जाया है। नहीं, कहीं ना कहीं पूर्णिमा जी, बहुत लोगों ने ये कहा है कि जो वहां आए थे वो सिर्फ गुंडे मवाली थे, ऐसे तत्व थे, अराजक तत्व थे जिन पर गोली चली। तो क्या हो गया? क्या आपके भाई गुंडे थे, मवाली थे, अराजक तत्व थे? राम का नाम लेने वाले अगर गुंडे हैं तो मैं तो मतलब यही कहूंगी कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, जो राम के नाम लेने वाले को गुंडे बता रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनके अपने पता नहीं क्या उनकी बुद्धि है, कैसे उन्होंने कैसे संस्कार पाए हैं, मुझे नहीं मालूम। हम राम के देश में हैं और राम हमारे पूर्वज हैं, तो राम का नाम अगर भारत देश में नहीं लिया जाएगा तो क्या मैं अफ्रीका में या वहां जाके लूं? बल्कि आजकल मैं तो ये बोलूंगी कि सारे विश्व में ही राम का नाम गूंज रहा है। सभी आज भारत देश की तरफ देख रहे हैं और ये जो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आज सारा विश्व उस तरफ देख रहा है। आप जानते हैं ना, वो न्यूयॉर्क में जो मुझे याद नहीं आ रहा है क्या, टाइम्स स्क्वायर, वहां पे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन जो है वो पूरा लाइव दिखाया जाएगा। इससे बड़ी बात हम कुछ और मान सकते हैं? न्यूयॉर्क में जहां पर हिंदू कितने होंगे, गिने चुने होंगे, उसे देखने वाले बाकी विदेशी भी होंगे ना। तो राम का नाम लेना अगर अराजकता है तो हम तो बार बार लेंगे। आप फिर गोली चला दो,
हम फिर गोली खाने के लिए तैयार हैं। अगर राम का नाम लेने से गोली चलती है तो हम फिर खाने को तैयार हैं। आपको अपमानित होना पड़ा, उसके बाद घटना घटी, अभी तो सम्मान मिल रहा है, पर समाज ने कभी आपको तकलीफ दी, कभी आपको कहा? नहीं, समाज ने और इस देश ने कभी नहीं कोई तकलीफ दी। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं जिन्हें ये सब बातें समझ में आती नहीं है, वो ऐसे राम भक्तों का भी अपमान कर देते हैं। ये माने अब मैं क्या बताऊं, देवता और राक्षस दो तरह के हमेशा रहे हैं। आप अच्छाई है तो बुराई भी है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि राम का नाम लेने वाले तो देखिए देवगण माने जाएंगे, और ये हो सकता है कि राक्षस गण के लोग हों, तो इन्हें तो राम का नाम लेने से परहेज होगा ही। अभी हमारे साथ मोहन जी भी हैं, पंकज जी भी हैं, शिव शंकर जी भी हैं और पूर्णिमा जी भी हैं। आप नाम में ही देखिए कहीं ना कहीं देवत्व रामत्व है। पर मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अक्टूबर 1990 का सत्य क्या है? 30 अक्टूबर 1990 का सत्य क्या है? पूर्णिमा जी ने कहा जो दिखाया गया झूठ था, तो सत्य क्या है? वास्तव में थोड़ा माइक अपने हाथ पास में रखिएगा। हाँ जी। वास्तव में पूरा संघ परिवार और हिंदूवादी सारे संगठन देश के राम जन्मभूमि के आंदोलन में लग रहे थे। पहली बार कार सेवा को 30 अक्टूबर को बुलाया था, तब मुलायम सिंह जी का शासन था और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और वो उस संविधान की रक्षा कर रहे थे जिसके प्रथम पृष्ठ पर ही प्रभु श्री राम अंकित हैं। कौन से संविधान की अभी बात हो रही थी आनंद जी कि जिस संविधान की वो रक्षा कर रहे थे ना, उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर रामचंद्र जी छपे हैं। गांधी जी से पूछा गया आप देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजों से क्या तकलीफ है? बोले नहीं, हम अपने देश में राम राज्य लाना चाहते हैं। और मेरी बहन वो भी स्वयंसेवक थे, शरद और राम। हम स्वयंसेवकों की कुछ मिट्टी अलग ही बन जाती है, बलिदानों से कतराते नहीं, घबराते नहीं। बंधुओं, राम और शरद की बहन के आंखों के आंसू और न जाने कितनी बहनों के आंखों के आंसू ने हमें ये आनंद का क्षण दिखाया है। मैं उस मोर्चे पर था जिस मोर्चे पर ये आज कोठारी बंधुओं की बहन बैठी है, मेरी बहन भी बैठी हो सकती थी, क्योंकि प्रत्यक्ष में 30 अक्टूबर को कार सेवा के लिए बुलाया था। हमें 29 अक्टूबर को गुप्तार घाट पर गिरफ्तार कर लिया। 20 दिन तक 10 दिन तक पैदल पैदल गांव की यात्रा की। पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश मानो राम का भक्त हो गया था। कोई राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था, कोई जाति नहीं हुआ करती थी। गांव तिवारियों का भी आया, गांव अवर्ण जाति के भी आए, मगर सब में एक ही नारा था, जय श्री राम। और किसी के घर का कुंडी खटखटा दो, माता जी प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो वो कभी उन्होंने खाली पानी नहीं दिया। जैसे चबेना उनके घर में पहले से उपलब्ध था। 29 तारीख को गुप्तार घाट पर गिरफ्तार करने के बाद हमें खपराडी एक अस्थायी कॉलेज अनंत इंटर कॉलेज में ले गए। आज से 34 साल पुरानी बात है, तब मेरी उम्र 23 साल थी, आज मेरी उम्र 56 साल है। तो कुछ त्रुटि भूल चूक हो सकती है, मगर खपराडी में हम जेल तोड़कर भाग गए और 1 नवंबर को पुनः अयोध्या पहुंच गए। 2 नवंबर को पुनः आह्वान हुआ कि कार सेवा के लिए पुनः जाना है, और तीनों तरफ से आधे आधे स्वयंसेवकों की टुकड़ी और गई। एक चौराहे पर, मैं छोटा था वाहिनी में सबसे छोटा था, तो वो चौराहे का नाम तो मुझे नहीं मालूम, मगर वहां पहुंचते ही हमें आदेश था कि जैसे ही पुलिस रोके आप रामधुन बैठ के गाना शुरू कर देना। मगर हमने तो रामधुन शुरू कर दी थी, हमारे हाथ में तो डंडी भी नहीं थी। आंसू गैस का गोला इधर आया, आंखें बंद हो गई, पुलिस ने लाठी चलाना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर में मालूम पड़ी गोली चल गई। एक कार सेवक को गोली लग गई, दूसरा भाई उसे बचाने आया तो उसके सिर में गोली मार दी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये दोनों सगे भाई हैं। आज उनकी बहन के दर्शन कर कर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। वास्तव में मेरी बहन शरद और राम वो तुम्हारे भाई थे, हम भी आपके भाई ही हैं। आप धैर्य धारण करें, निश्चित रूप से उनके बलिदान का परिणाम मैं भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो स्वरूप दिख रहा है उससे प्राप्त हो गया। पंकज जी, मैं जल्दी से आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या अभी महसूस हो रहा है? आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा माइक पास में रख के बोलिए, पास में रखिए, ऑन है। हेलो, हाँ जी बोलिए। उस समय की करी मेहनत का आज फल मिल रहा है। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और दिवाली मनाएंगे उस दिन, दीपक सब करेंगे जो उस वक्त श्रम किया, जो सेवा की, आज उसका आनंद खुशी मनाएंगे। उसका आनंद खुशी मनाएंगे भरपूर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूर्णिमा जी, बड़े वर्षों से आप इसका इंतजार कर रही हैं, अयोध्या में रहेंगी 22 तारीख को। अंतिम प्रश्न। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का पल आया है, मुझे तो वहां रहना ही है। और मैं ये देख रही हूँ कि प्रभु की असीम अनुकंपा सिर्फ अयोध्या जी पर नहीं, पूरे भारत भू पर बरस रही है। और मैं सच कहूँ तो अंतन मन से बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखिए, शुरुआत थोड़ा सा भावुक होकर आंसुओं के साथ किया, अंत भक्ति भाव से करते हैं। शिवशंकर जी, एक गीत आप गाना चाहते हैं, उसी से फिर समाप्त करेंगे जी। देखिए, इस आंदोलन को काल सेवकों ने, हम लोगों ने जितना जिंदा किया, ऐसे ही साथ में भक्त मंडली के संतों ने अपने भजनों के माध्यम से उसमें ताकत दी। कन्हैया मित्तल जी जैसे गायकों ने सुंदर सुंदर भजनों का गा करके हमको प्रोत्साहन दिया। चंद्रवरदाई एक कवि हुए थे जिन्होंने 4 बांस 24 गज अंजुल अष्ट प्रमाण जी, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान जी करके उस दुष्ट की हत्या की थी, अपना बदला पूरा किया था। ऐसे ही हम लोगों के समय में हम लोग गीत गाते थे, अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। श्री राम के चरणों में आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। वाह, राम युग में राम चेतना सब में जाग जाए और हम सब अपने देश के लिए कुछ कर जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर कण में, हर मन में, कण कण में राम, राम सिया राम सिया राम। हम कहते हैं, मानते हैं, तो क्या वो हो रहा है? पिछले 9 साल में ऐसा दिख रहा है? नहीं, थोड़ी सी नजर घुमा लीजिए। आज आपके कार्यक्रम का नाम है अयोध्या पर्व राम युग। राम जी की ज्योति स्थापित होने जा रही है। 11 दिन का एक अद्भुत यम नियम के साथ प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं। जमीन पे सो रहे हैं, अपने खाने से पहले गौ माता को खिला रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यम नियम का कठिन पालन कर रहे हैं। और याद रखिए, मैं तो न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहूंगा, ये जो राम ज्योति है ना, केवल घी और दिया से नहीं जली है। ये राम ज्योति इस देश के 52 करोड़ लोगों को पहली बार बैंकों से जोड़ करके जली है। ये राम ज्योति मेरे भैया 4.25 करोड़ बेघर को उनको छत दे करके तो जली है। ये राम ज्योति 13 करोड़ लोगों के घर में पहली बार शौचालय बना करके, इज्जत घर दे करके जली है। ये राम ज्योति
55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया सालाना इलाज देकर के बनी चली है। इस ज्योति का कितना लौ होगा, जो ज्योति न जाने कितने लगभग 12 करोड़ माताओं की आंखों से धुआं हटा करके जली है। उस ज्योति पर विपक्ष को गर्व हो न हो, हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा साहेब, हमें रहेगा साहब। क्या बात है। तो जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप पर यह आरोप लगता था कि आप कह रहे हैं कि मंदिर तब बनाएंगे जब आप कुर्सी पर बिठाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 24 के लिए कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमें वोट बनाकर फिर से सरकार बनवा दो। वो प्राण सियासत भी ला रहे हैं इस आस्था वो में। प्राण प्रतिष्ठा में कभी नहीं आते। वो तो राम का प्राण हरने में विश्वास करते हैं, राम को प्राण देने में विश्वास ही नहीं करते हैं। अभी जो लोग भी आपके मंच पे आएंगे, जो इंडी अलायंस से होंगे, आपको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या दिक्कत है? 500 साल से राम जी के मंदिर को तोड़कर, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी। अगर आज का कानून उस समय होता ना, तो बाबर को फांसी की सजा होती। आप किसी दूसरे, आज भी मैं इस शो में कह रहा हूं, मैं एक सांसद के रूप में भी कह रहा हूं, किसका मजाल है जो किसी भी धर्म के किसी देवालय को गिरा दे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, क्या कोई तोड़ सकता है? हमारा कानून ऐसा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने में राम का सम्मान क्यों छूट जाएगा? चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, उदर भूख सबकी बुझाता, राही का तरवर, प्यासे का सरवर, सकल प्राणियों का जो दाता, कष्टों का करता है जो भंजन, महादेव करते हैं जिनको नमन। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान, वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। न्यूज 18 के भी राम है। आपने भी बहुत सुंदर भजन बनवाया है, मैं सुना मैं उसको। देखिए, हमने तो बस इतना कहा है कि पल पल में, युग युग में, कण कण में राम, हर क्षण में, हर तन में, हर मन में राम, प्रणाम सिया राम, प्रणाम सिया राम। ये जो आपने प्रणाम कहा ना, ये प्रणाम कहा था जनकपुर ने, जब ससुरारी में आए राम। हम उसी धरती के एक वासी, मेरे तो युग में हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, हर क्षण में राम, सिया राम, सिया राम। Let's go across to somebody who's got such a melodious voice, and her Manas part along with her brothers is such a big hit. The one and only Maithili Thakur is with us. Maithili, namaste. कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैथिली, आप तो अभी पटना में हैं, आपको तो यहाँ अयोध्या धाम में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मानस पाठ आज अगर किसी का प्रचलित है तो वो आपका और आपके भाइयों का है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वही है कि राम भजन ही बैठ के गा रहे हैं, चाहे वो हम अयोध्या में हो, चाहे मिथिला में हो। हाँ, ये मिथिला का कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथिला का अयोध्या से क्या कनेक्शन है। आप लोगों के लिए तो भगवान राम अभी आ रहे हैं अयोध्या में, हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए तो भगवान राम यहीं के हैं। हमने पाहुन बना के उनको रख लिया है, यहीं पे रहते हैं, वो हमारे सभी के हृदय में रहते हैं। और सीता जी के नाते से इतना बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि हम पूरे देश में भले ही भगवान राम को आराध्य और भगवान राम को बहुत
उनका नाम बड़ा संभल के लिया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मिथिलांचल में भगवान राम को बहुत गाली भी दी जाती है और बहुत स्नेह किया जाता है और एक पाहुन की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा भाग्य है कि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं, मैथिली में कोई गाना है, गीत है जो आप हमें सुना सकते हैं रामलला पर, राम पर? जी जी जी, बहुत सारे गीत है। जी जी जी, एक गीत है, पहले ही मैं आपको उसका थोड़ा सार समझा दूं कि जब भगवान राम हमारे यहाँ आते हैं तो उनको पहले जी भर के निहारती है मिथिलानियाँ, क्योंकि सब बस उनके बारे में सुने हुए होते हैं कि भगवान राम जो हैं वो अयोध्या के हैं, राजकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन वो जब पहली बार मिथिला में आते हैं तो सब अपनी आंखें कोई बंद ही नहीं कर पाता है, एक पलक झपक भी नहीं पाती है कि भगवान राम को जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना हम उनको निहारें। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर सा गीत है कि सखियां उनके लिए क्या गाती हैं। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोल भाले, ऊपर से तो बड़े भोल भाले, पर भीतर से नखरे निराले, पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, क्योंकि तुम जीजा हम साले, पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। क्या बात है, कितनी सुंदर बोल है इसके और भाव कितना अच्छा है। तो जैसे कृष्ण के लिए ऐसे गीत होते थे, नटखट थे कृष्ण, वैसे ही कुछ गीत आप कह रहे हैं कि मिथिला में और मिथिलांचल में रामलला के लिए भी हैं, राम के लिए भी हैं। जी जी, क्योंकि हमको ऐसा हमने जितनी कथाएं सुनी है अपने बाबा से या फिर जितने गीत सुने हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, उसमें भगवान राम का